इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? क्या हालचाल है? गुड इवनिंग मोहम्मद सुहेल, गुड इवनिंग कोमल, देवराज, किरण, अनमोल, अजय, अनिरुद्ध, नेहा, प्रतिंद्या, मिस संथिका, संकरन, दिव्या कुमारी, गुड इवनिंग बच्चों। मुक्तेश्वरी, सयान, कादम्बरी, मोहम्मद आकिब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्योति, मीनाक्षी, मनोहर, आयशा, Tumpa Sen. Good evening, everyone. Hopefully, all of you have got revised already, so we can start the test. What we have discussed in the last lecture. लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ रिवीजन भी किया था. होपफुली सब लोगों ने कर लिया होगा. गुड इवनिंग श्रुति, पूजा, नेहा, बाला मुरली, प्रिंस, मिस्टर वी, नैन्सी, गुड इवनिंग बेटा. संजना, दीपांशु, शैना, अशोक कुमार, मिस्टर राम झा, अविनाश, सुरिंदर, नाफिया, मानसी, रश्मिता, रितु बनर्जी, सौम्या, प्रिया, तनु. गुड इवनिंग एवरीवन. So shall we start with the test? Hopefully you all of had got taken the revision already. तो आपका रिवीजन हो चुका होगा. तो एक बार टेस्ट के साथ हम करेंगे. ये रिवीजन हम लोग कर चुके हैं. आई एम नॉट टेकिंग दिस टाइम. ठीक है. आप first you prepare this sheet on your notebook. This is self assessment test and we have 10 questions. आपको मुझे आंसर नहीं भेजने हैं. You need not to send me the answer. You just check yourself whether how much you are at which place you are. ठीक है. गुड इवनिंग अरविंद, अनिता, केशव, भूमिका, तीक्षण, कलैशवी, ममता, अमन, निनाद. गुड इवनिंग बच्चों. तो जस्ट प्लीज जस्ट प्रिपेयर द शीट so we can start the test of what we have discussed in the last lecture. तो सबसे पहले मीट मिस्टर दामोदर भाई and दामोदर भाई will give you the answer of the question. Okay, good evening Rakhi, Lokesh, Jay, Varun. So first question before you, the LLP bill was passed by the parliament on 9th January, 12th December, 31st March 2009, none of the above. The right answer is B. It is 12th December 2008. Next question. Which schedule of LLP Act 2008 deals with conversion of a private company into LLP? First schedule, second schedule, third schedule, fourth schedule. Nobody need to send me the answer. This self-assessment test. Okay. The answer is third schedule. Second for conversion of partnership firm into LLP, and fourth for unlisted public company into LLP. Right? Indian Partnership Act 1932 applicable to LLPs. True or false? The answer is false. Indian Partnership Act 1932 is not applicable to LLPs.
In case of LLP, liability is limited of LLP, partners, both, none. गुड इवनिंग माधव, कैसे हैं बेटा? द आंसर इज in case of LLP, the liability is limited of partners, not the LLP. In case of death of all the partners, the existence of LLP comes to end. This statement is true or false? The answer is false because LLP has the perpetual succession. What is the maximum limit of number of partners in LLP? 20, 50, 100, no limit. The answer is no limit for maximum numbers. What is the minimum required capital for formation of LLP? 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh, no such requirement. The answer is no such requirement. LLP can be formed for profit or charitable purpose. Yes. No. LLP can be formed for profit only. No. LLP can be formed for charitable purpose only. None of the above. The answer is B. No, LLP can be formed for profit only, right? Administration authority in case of LLP is registrar of firms, registrar of companies, both, none of the above. Administrative authority. So just call the Damodar Bhai to give the answer. The right answer is registrar of companies. The last question, having common seal is mandatory, true or false? The answer is no, false. So this was the small test for the purpose of revision. एक बच्चे ने क्वेरी करी है सर, नेहा ने क्वेरी करी है, नेहा कह रही हैं सर दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू आस्क्ड इन द एग्जाम। आई डोंट थिंक इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे, ये थोड़े बेसिक्स हैं इनका। आज जो टेस्ट हुआ इसका पर्पज ये था कि जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो हमें रिकॉल हो जाए, ठीक है। सेकंड थिंग इज एग्जाम में जो एमसीक्यू होने चाहिए वो केस बेस्ड होने होंगे और क्विज बेस्ड होने भी चाहिए, अब बड़े हो गए हो
फाउंडेशन से इंटर में आ गए हो, ठीक है। और एक क्वेरी है देवेंद्र सिंह जी की, सर कैन बी राइट एंड कंपनी इन द नेम ऑफ एलएलपी? एंड कंपनी इन द नेम ऑफ एलएलपी, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं कर सकते। एंड आई थिंक आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू who has who has given all the correct answers. First call from दिव्या। दिव्या ने कहा है कि सर मेरे तो सारे सही हैं, वेरी गुड। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ द टाइम टू स्टार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ एलएलपी, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग इज पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। कोई बात नहीं। ऑलवेज अ क्वेरी फ्रॉम कॉमन क्वेरी फ्रॉम योर साइड, एक क्वेरी हमेशा आती है आप लोगों की तरफ से। समवन से सर इंग्लिश में पढ़ाइए, समवन से हिंदी में पढ़ाइए, और मैं हर बार बोलता हूँ, आई ऑलवेज टेल यू आई एम जस्ट रिपीटिंग इन हिंदी व्हाट आई हैव गिवन इन इंग्लिश। तो डोंट वरी, मैं डबल पढ़ा रहा हूँ, डबल मेहनत कर रहा हूँ, दोनों बातों को ध्यान से सुनिए। जिसको जो समझ में आता है इंग्लिश हिंदी प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। लेट्स स्टार्ट। रेडी एवरीवन? So let's start the topic partners and their relations. First point is section 22. What is the eligibility to be a partner? On the incorporation of LLP, the person who subscribe their names to the incorporation of documents shall be the partners, and any other person may become a partner of LLP by in accordance with the LLP agreement. So at this point in this section, two types of partners has been discussed. First, the person who has given their name at the time of incorporation, that those will be the partner after the LLP is incorporated or registered. So those are called first partners. And after that, it means after the incorporation, any partner which is added as per the agreement, as per the deed, will be the partner of the LLP. क्या कहा इस सेक्शन में कि जो इनकॉर्पोरेशन के समय नाम जाएंगे, वी हैव डिस्कस एटलीस्ट 2 मेंबर शुड बी देयर, 2 लोगों के नाम जाने हैं। जब तक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, दे आर कॉल्ड प्रपोज पार्टनर टू बी द पार्टनर्स, बट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन दे विल बिकम फर्स्ट पार्टनर, ठीक है। और उसके बाद जो भी पार्टनर ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, वो भी पार्टनर कहलाए, राइट। Relationship of partners, section 23. Mutual rights and duties of LLP and its partners shall be governed by the agreement. Agreement means partnership deed between partners and between LLP and partners. जो rights हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? According to the partnership deed, right? LLP agreement and any change to be filed with the registrar in the prescribed form, manner and accompanied by prescribed fees. What subsection 2 says? LLP agreement to be submitted to ROC, and any change, it means change can be done after formatting या execution of partnership deed. LLP agreement को सबमिट करना जो आपने ओरिजिनली बनाया, उसके बाद अगर चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को भी आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को विद द प्रेस्क्राइब्ड फी। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक इस स्क्रीन पर कोई डाउट? Srinivasan saying, sir, today's PDF not uploaded. Beta, please check. I have already uploaded. Devraj is saying, sir, best teaching. Thank you, बच्चे। यहां तक कोई डाउट? ए और बी पॉइंट, बी पॉइंट अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। Agreement in writing made before the incorporation, that is pre-incorporation agreement. Agreement in writing made before incorporation, that is pre-incorporation agreement of LLP between persons who subscribe their names to the incorporation document may impose obligation of an LLP, provided such agreement is ratified. Ratified means confirmed. Please underline ratified.
Ratified means confirmed by all the partners after the incorporation of LLP. यानी कि if any pre-incorporation agreement between the person who will be the partners may be imposed on LLP. यानी कि जिस समय LLP बनी थी उससे पहले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, the contract which was entered before the incorporation of LLP are called pre-incorporation, and these contract will be who will be liable for this contract? Whether LLP will be liable? The answer is no, because at the time of contract there was no LLP. भाई जिस समय LLP बनी उस समय तो LLP बनी उससे पहले के जो एग्रीमेंट है उन पर LLP लाइबल नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस वक्त LLP थी ही नहीं दुनिया. तो who will be the liable? The person who has subscribed their names, जिन्होंने एंटर किया. But after the incorporation, if all the partners are agree for the liability for pre-incorporation contract, then LLP will be at the liability. इनकॉर्पोरेशन के बाद LLP से कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए थे उनको पेमेंट करने के लिए अगर सारे पार्टनर रेडी होंगे तो वो लायबिलिटी LLP की बन जाएगी. थर्ड पॉइंट में किसी को डाउट है तो बताओ. थर्ड पॉइंट में किसी को डाउट हो तो पूछो बच्चों. Fourth point, in the absence of agreement as to any matter, the mutual rights and duties of the partners and mutual rights and duties of the LLP and the partner shall be determined by the provisions set out in the first schedule. It means if there is no partnership deed for mutual rights and liabilities among the partners, then first schedule will be applicable as it is. अगर इन्होंने कोई डीड नहीं बनाई है तो फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा. तो प्लीज टेल मी एनी डाउट इन पॉइंट नंबर 3 और 4. टिल टाइम आई एम टेकिंग योर क्वेरीज. Sir, can we use your PPT for preparation for exams? Yes, definitely. In PPTs, I have covered your study module. ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं. बेटे someone is saying sir abhi till now the PDF of today's lecture is not uploaded, but I am saying I have uploaded in the break. I will discuss with technical staff. जो आपको शो नहीं हो रहा है ऐसे ऑलरेडी शो हो चुका है. What is the eligibility of partners? We have discussed who will be the partners. कौन कौन सा we have discussed in last lecture बेटा. Sir, it is written it may impose an obligation on LLP. It means the liability which have taken. Listen, regarding point number 3, Mehreen Khan is asking, sir, it is written that it may impose an obligation on LLP. Listen, what it's saying. The contract. Suppose, let's say an example. I have me and my friend is going to incorporate an LLP. Suppose today's date is 14th December, and at this date I have contacted with an advocate for financial consultancy regarding the formation of LLP. So we have contact on behalf of LLP for the for a legal advisor, that is advocate, and for the payment of fees of 10,000 rupees. But this fees is concerned with the LLP formation. So LLP should take the responsibility. But what is the matter? Today there is no LLP. LLP will be there on the date of incorporation, right? Up at that time, whether LLP will be ready to take the liability of that contract which was not at the time of non-existence of that LLP. जिस समय LLP नहीं थी उस समय कॉन्ट्रैक्ट है, क्या LLP राजी होगी? भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया एडवोकेट से तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, लेकिन मैंने किसके बिहाफ पे किया? मैंने किया LLP के बिहाफ पर. तो जिस दिन LLP बनी तो ये जो लायबिलिटी मुझे चुकानी है मैं इंपोज करूंगा LLP के ऊपर. कब? जब सारे पार्टनर
जो है एलएलपी बनने के बाद वो राजी हो जाए, एग्री हो जाए, ओके वी आर रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ फीस ऑफ एडवोकेट। क्लियर इतनी बात? हेमलता, आई थिंक यू शुड बी क्लियर नाउ। नैन्सी, मैं आपकी प्रॉब्लम अभी देख के तो कॉल करूंगा, मैं आपको बुक को देख के, आपने कहा है बुक में ये लिखा हुआ है, आई विल चेक ना। अभी मैं स्टडी चेक करूंगा, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, राइट। एलएलपी, सर एलएलपी विल बी लाइबल आफ्टर रेटिफिकेशन। यस, रेटिफिकेशन होने के बाद ही एलएलपी लाइबल होगी, अदरवाइज अगर एलएलपी रेटिफाई नहीं करती है, सपोज आई हैव मी एंड माय फ्रेंड फॉर्म द एलएलपी विद टू अदर पार्टनर्स and they are not ready to pay the fees of advocate on the part of LLP. So I and my friend will be liable because me and he taken the contact with the advocate. ठीक है सर। सर जी, वी विल आल्सो फाइल एलएलपी एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, आपने पढ़ा था, यू आई थिंक आप भूल गए, एलएलपी एग्रीमेंट के लिए टाइम दिया हुआ आरओसी ने 30 डेज का। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज तक भी हम सबमिट कर सकते हैं। Mr. Jagat is asking, sir, if any pre-incorporation agreement is between LLP and partners may impose obligation on partners even after incorporation, provided it should be ratified by partners. Is it correct? You are correct, but something missing in your query. You are saying if any pre-incorporation agreement is between LLP and partner. LLP तो है ही नहीं. If the contract is pre-incorporation, then there is no chance for LLP. LLP शब्द तो आएगा ही नहीं ना. चलिए, नाउ सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, पार्टनरशिप इंटरेस्ट को खत्म होना, सेक्शन 24, पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। विच एग्रीमेंट? पार्टनरशिप डीड। विच एग्रीमेंट? पार्टनरशिप डीड। by giving notice in writing of not less than 30 days, yani at least 30 days before, partner has to give the notice to the LLP that I will not continue as partner in LLP. I will resign from the as a partner from the LLP. यानी कि अगर किसी पार्टनर को फर्म छोड़ के जानी है तो कम से कम 30 दिन पहले वो इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को, नोटिस देगा कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं इस फर्म से रिजाइन कर रहा हूं। एंड द पर्सन शैल सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन द डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, अगर फर्म की पार्टनर की डेथ हो जाती है या फर्म डिसॉल्व हो जाती है। If he is declared to be unsound mind by competent court, remember unsound mind, or if he has applied to be adjudged as an insolvent or declared as an insolvent. But please tell me, any of you, what is the difference between point number 1 and 2? What is the difference between point number 1 and 2? Anybody? बोलो भाई। What is the difference between point number 1 and 2? One is at the discretion, at the intention of the partner. But in case of point number 2, it is compulsory. Cessation of partnership interest. Dissolution means end. रिश्ते खत्म, फर्म डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, राइट? क्लियर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 1 and 2? Yes, Amol is saying, sir, in point number 1, partner may seize on his own interest. Very good. In Manish saying, sir, voluntary and non-voluntary. Non-voluntary की जगह आप यूज कर सकते हैं compulsory. ठीक है, very good.
mutual consent first in and in second later by decision of court, not the decision of court. It is compulsory by law. It is called by operation of law. ठीक है? Okay, good. Mother saying point number 1 is resigned and second point is resigned by someone. No. In point number 2, it is compulsory, right? Now, former partner is to be regarded. This is very important point, just a subsection, but it is important for your examination point. A descriptive question may be asked on this point. Former partner is to be regarded still being a partner of LLP. Unless, what unless? A notice has been delivered to registrar. Means by former partner or LLP. Stay on this point to the registrar. रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं गया, इन्फॉर्म नहीं हुआ कि पार्टनर छोड़ के चला गया है, तो पार्टनर लायबल रहेगा. अब who will inform the ROC? Partner or LLP. It means partner can also inform ROC and LLP have to inform the ROC, right? Even after cessation of a partner from LLP, the partner will still be liable for any obligation which he has incurred while being a partner. Suppose a partner has resigned from the firm with effect from 14th December 2023. But in this case, he will not be liable after the resignation, but he still be liable for the transaction entered at the time when he is a partner. He is the partner in the firm. आज से पहले जो भी काम हुआ, क्योंकि उस समय पार्टनर था, उसके लायबल रहेगा. आज के बाद जो काम होगा और इन्फॉर्म कर दिया आरओसी को, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है. क्लियर? Fifth point, where a partner of LLP ceases to be a partner, the former partner or a person entitled to his share in consequence of death, that is legal here, or in case of insolvency, official assignee of the former partner shall be entitled to receive from LLP. Who three persons are entitled? If in case of point number 1, partner resign kar diya, then former partner. In case of death of partner is legal here. In case of partner is insolvent, then official assignee will receive from LLP. What he will receive? Amount of capital contribution actually made to LLP. जितना भी उसने capital contribute किया था LLP में, वो claim करेगा. And profit share, accumulated profit. Right to share in the accumulated profit of LLP after deduction of losses as at the date the former partner ceased to be a partner. जिस दिन फर्म को छोड़ा, वहां तक का accumulated profit प्लस जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी वो क्लेम कर सकते. दो चीज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्लस accumulated profit, राइट? Ashutosh is asking, sir, how many days to be informed to register in case of former partner? Just wait, we will discuss, definitely. ठीक है? Former partner or person entitled to his share in consequence of the death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP. Means, suppose the partner has resigned from today. Today is the 14th December. So after this date, former partner will not interfere. He can claim his share from the firm, but he cannot interfere in the management. In the same way, the legal heir of the partner in case of insolvency
The official assignee cannot interfere in the management of the LLP. क्लियर इतनी बात? यहां तक कोई डाउट बच्चों? चलिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर सेक्शन 25। फर्म में चेंज होता है पार्टनर्स को लेकर, ऐड और लेस होता है, तो उसके लिए इन्फॉर्म कैसे करना है, कब करना है, प्लीज सी। एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन 15 डेज। पार्टनर का अगर एड्रेस चेंज होता है तो उसको 15 दिन के अंदर एलएलपी को रिटर्न नोटिस भेजना पड़ेगा। इफ पार्टनर चेंज हिज एड्रेस, then within 15 days from the date of change he should inform to LLP about the change. So first point very much clear. Second point, a LLP shall where a person becomes or ceases to be a partner. Becomes means admission, ceases to matlab outgoing, incoming partner or outgoing partner. File a notice, just file a notice within to ROC within 30 days from the date of admission or outgoing. Who will inform? LLP shall. यानी कि कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, आने से या जाने से 30 दिन के अंदर एलएलपी की जिम्मेदारी है कि वो आरओसी को इन्फॉर्म करे। इट मींस within 30 days from incoming or outgoing, LLP should inform to ROC about such change. And where there is change in the name or address of partner, पार्टनर का नाम चेंज हो रहा है या पार्टनर का एड्रेस चेंज हो रहा है, it shall inform, it shall file a notice to ROC within 30 days of such change. यानी कि 30 दिन के अंदर एलएलपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको? आरओसी। क्लियर इतनी बात? कोई डाउट? कोई सोया तो नहीं? कल की स्टोरी याद है ना, सोना मत। यहां तो कोई क्वेरी बच्चों? थर्ड सबसेक्शन 3, नोटिस फाइल्ड विद आरओसी अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या था? 30 डेज में नोटिस देना है, किसका? इनकमिंग का और आउटगोइंग का, और चेंज ऑफ एड्रेस और चेंज ऑफ नेम का, राइट? तो shall be in such form and accompanied by such fees as may be prescribed. Prescribed means prescribed by the rules. Shall be signed by designated partners of LLP and authenticated in the prescribed manner. And if it relates to incoming partner, then his consent will also to be submitted to ROC. क्या कह रहा है सबसेक्शन 3? कि आप जो इन्फॉर्म करेंगे वो एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट करेंगे, साथ में फीस जो जमा करनी है वो करेंगे ऑनलाइन। उस नोटिस उसको साइन कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे। थर्ड वन इज कि अगर इनकमिंग पार्टनर की इंफॉर्मेशन देनी है तो उसकी कंसेंट भी आपको साथ में लगेगा, राइट? ठीक है, एक पॉइंट में क्वेरी है, मैं अभी डिस्कस करूंगा बेटा इसको, इस सेक्शन को कवर करके। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? And if LLP contravenes in the provision of subsection 2, subsection 2 30 days में inform करना है, you have to inform to ROC in 30 days। उसमें कोई गड़बड़ करते हैं, then LLP and every designated partner of LLP shall be punishable with the penalty of 10,000। अगर आपने कोई पार्टनर आया चला गया, आपने इन्फॉर्म नहीं किया ROC को 30 दिन के अंदर, तो 10,000 रुपए का टीका आपको हो जाएगा। ठीक है? If any partner contravenes the provisions of subsection 1, यानी कि पार्टनर को इन्फॉर्म करना था, पार्टनर हैज टू इन्फॉर्म इन 15 days of about its change of address and name, he shall also be punishable with 10,000। पार्टनर का नाम चेंज करा उसने अपना, या अपना एड्रेस चेंज किया, 15 दिन में इन्फॉर्म नहीं किया एलएलपी को, तो 10,000 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर, राइट? ठीक है, 6 point section subsection 6 of section 25, what it says, person who ceases to be a partner of LLP may himself file with the registrar the notice referred in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that LLP may not file the notice with the registrar, and registrar shall obtain a confirmation of this effect from the LLP unless the LLP has
also filed such notice. Means partner has admitted or outgoing, but he thinks that LLP will not inform to ROC. So doubt hai. Then he can also file the information about change or incoming or outgoing. But in this case, registrar will confirm from LLP. He will send a notice for confirmation. कि क्या आरओसी क्या कहेगा कि भैया फला फला पार्टनर से आदमी ने नोटिस भेजा है कि वो आपकी फर्म में ऐड हो गया है या छोड़ के जा रहा है. Whether it is true, he will wait. It will wait 15 days. ROC will wait 15 days. ROC will wait 15 days. ठीक है. In that time, if LLP does not give the confirmation, then he will accept, he will confirm the notice given by the partner. यानी कि एक पार्टनर ने एंट्री की और उसने आरओसी को इन्फॉर्म किया कि देखो एलएलपी तो देगी नहीं, लेकिन मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको, मैं फर्म में आ गया हूं. आरओसी ने भेजा एलएलपी को, भैया ये लेटर आया, बताओ कंफर्म करो सही है कि नहीं सही है. आरओसी 15 दिन तक वेट करेगी. अगर कोई जवाब नहीं आया तो ये मान लेगी ये लेटर सही है, यानी उसकी इनकमिंग पे मोहर लगा. क्लियर इतनी बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो इससे पहले नेक्स्ट सेक्शन से पहले एक पॉइंट था बच्चों, ये मैं ले लूं जरा. एक बिटिया का था, एक बेटे का था हमारे का, क्या नाम है इसका, ऋतुराज. क्या कह रहे हैं सर? दैट मीन्स फॉर्मर पार्टनर as a consequence of retirement can interference in the management. No beta, former partner can not interfere. देखिए इस पॉइंट में क्या लिखा था कि फॉर्मर पार्टनर, जब आपका रिश्ता खत्म हो गया, भाई आप फर्म छोड़ के चले गए, तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते. ना वो कर सकते, ना लीगल हेयर कर सकते, ना ऑफिशियल असाइनिंग, जिस दिन आप फर्म छोड़ के चले. ठीक है. दूसरा पॉइंट, नेहा इज आस्किंग सर, मतलब सर पार्टनर को और एलएलपी को भी नोटिस फाइल करना पड़ेगा? देखिए पार्टनर की जो लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैज टू इन्फॉर्म टू एलएलपी एंड देन एलएलपी विल इन्फॉर्म टू आरओसी. ठीक है, ये नॉर्मल फीचर है. इफ एलएलपी डज नॉट इन्फॉर्म टू आरओसी, पार्टनर कैन ऑल्सो इन्फॉर्म. ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? वेरी गुड. What is the difference between point number V1 and point number 2B of registration? चलिए देखते हैं क्या कहते हैं बच्चा. ये पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये कौन किसका क्वेश्चन है? मिस रमा देवी. लिसन बेटा, इन पॉइंट नंबर 1 पार्टनर विल इन्फॉर्म टू एलएलपी एंड इन पॉइंट नंबर 2B एलएलपी विल इन्फॉर्म टू आरओसी. भाई मैं पार्टनर हूं, मेरी जिम्मेदारी किसको है? एलएलपी को इन्फॉर्म करने की. आई एम द पार्टनर, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट टू इन्फॉर्म टू एलएलपी एंड एलएलपी विल इन्फॉर्म टू आरओसी. क्लियर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 1 एंड 2? Mr. Jagat is saying, sir, in case of LLP, any change in the name or addresses, we have to give notice within 15 days. But in case of partners, any change in the name or address, we have to give notice in 30 days. नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं मिस्टर जगत. Partner, if partner is changing his address, he will inform LLP within 15 days of change. And after that, LLP will inform to ROC. ठीक है. Sanjana, I have already replied your answer. I think you must be clear about that. What a Prince saying. सर पॉइंट नंबर 5 वाली 10,000 की पेनल्टी एलएलपी को देनी है या आरओसी को? एलएलपी को देंगे भाई, आरओसी को इन्फॉर्म कर. एलएलसी मतलब जो पेनल्टी आप कह रहे हैं ना कि पार्टनर ने एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं किया अबाउट चेंज, तो 10,000 की जो पेनल्टी है वो किसको पे की जाएगी? वो आरओसी के अकाउंट में जाएगी. ओके रमा, अब आई थिंक यू आर क्लियर नाउ. Sir, also explain subsection 1 of section 24. If agreement state a period of less than 30 days, then will it prevail or not? Just come to the section 24, subsection 1.
person may cease to be a partner of LLP in accordance with the agreement by giving notice in writing of not less than 30 days to be the other partners of his intention to resign as partner. In this point, Manish is asking, sir, it may be, what is asking? Subsection 1 of section 24, if agreement state a period less than 30 days. Okay. In subsection 1, the time limit is mentioned 30 days. It means a partner has to give at least 30 days notice. And he says, if partners are agree to reduce this time limit of 30 days, let's say 25 days, I don't think so it will be acceptable. It should be at least 30 days. ठीक है ना? ये 30 days ही रहेगी, इसमें कम नहीं हो सकती. Now, extent and limitation of liability of partners. Partner as agent, section 26, I have already discussed with you that every partner of LLP is the agent of LLP, not the other partners. What was in Partnership Act? Every partner is the agent of other partners, working for all. ये एक line थी उसमें, working for all, right? But in case of LLP, partner of LLP, agent of LLP, not other partners. Means other partners are not responsible or not liable for the acts of other, right? Partner is not liable for the acts of other partners. And only LLP will be liable for their acts, right? ये तो clear हो गई बात. Now, extent of liability of LLP, section 27. What is the liability of LLP? LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person. LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person, that is third person. If partner has no authority to act for the LLP in doing the particular act, or the person means third person. Person means third person. Person knows that he has no authority. He means partner. He means partner has no authority or does not know or believe him to be a partner of theirs. क्या मतलब? Simple language. अगर हम बात करें subsection की, if we talk about this subsection in very simple language, means if partner is not authorized to do any act, and even that he does something, LLP will not be liable. Or we can say LLP will not be liable for any act of the partner which was not authorized by LLP. अगर LLP ने किसी पार्टनर को कुछ काम के लिए ऑथराइज नहीं किया था, उसके बावजूद वो करता है, तो LLP लाइबल नहीं होगी, और जो पर्सन है वो खुद लाइबल होगा. बट कंडीशन इज, सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट फॉर दिस पॉइंट. And only one condition is not sufficient. Second condition is also must be there. क्या? Third person who is dealing with the partner have the knowledge that person is not authorized to do the such. पार्टनर को ऑथोराइज नहीं किया गया, LLP लाइबल नहीं होगी. लेकिन जिसके साथ डील किया उसे भी मालूम नहीं होना चाहिए. अगर उसे मालूम है, क्या मालूम है उसे कि ये जो पार्टनर है ना, ये तो ऑथोराइज है, ऑथोराइज नहीं है, तो लाइबल नहीं होगा. प्लीज रीड वंस अगेन पॉइंट नंबर 1 and 2 वंस अगेन. क्या कह रहा है? LLP will not be liable for any unauthorized act of partner, and the person with whom the partner is dealing should have the knowledge that partner is not authorized to do so, and he has never believed, कोई आइडिया नहीं है उसे कि वो ऑथराइज है इसका, उसको मना कर दिया गया, उसको आइडिया नहीं. क्लियर इतनी बात? कोई कंफ्यूजन? पहली बात क्या बताई मैंने आपको? पार्टनर अथॉरिटी नहीं है, और जिसका डीलिंग कर रहा है उसे पता है कि ये आदमी ऑथोराइज नहीं है, फिर भी डील कर रहा है,
एलएलपी लाइबल नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है, लेट्स सपोज द थर्ड पर्सन हैज नो आइडिया अबाउट हिज द पार्टनर इज नॉट ऑथराइज्ड, अगर एलएलपी विल बी लाइबल, द आंसर इज यस। जो थर्ड पर्सन है उसे पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है उसे, कि जो पार्टनर है वो ऑथराइज नहीं है, तो उस केस में भी क्या एलएलपी लाइबल होगी? द आंसर इज यस, बट एलएलपी कैन क्लेम फ्रॉम पार्टनर। जहां तो कोई डाउट बच्चों? मीन्स ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मीन्स जो अपनी लाइबिलिटी को सॉल्व कर सकता हो, पे कर सकता हो। एनी डाउट इन सबसेक्शन 1 ऑफ पॉइंट सेक्शन 27 प्लीज आप। नेहा कह रही है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन मतलब हो, एक सिंपल लैंग्वेज में नोट कर लो आप प्लीज, प्लीज नोट इन योर बुक इन सिंपल लैंग्वेज। आई एम टेलिंग यू, LLP will not be liable for any act, will not be liable for any act of the partner which is not authorized by LLP, and third person has the knowledge that partner is not authorized. अब नोट कर लिया आपने, अब ये क्लियर हो गया। अब बताओ कोई डाउट, समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? नहीं इसमें इसका इस लाइन का मतलब समझिए, इस पॉइंट का, और के बाद से डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी ए पार्टनर, यानी कि उसको आइडिया नहीं कि वो पार्टनर भी है फर्म का। ठीक है ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में लिखवा दिया आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या लिखा है मैंने आपको? द एलएलपी विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर इफ पार्टनर इज नॉट ऑथराइज्ड एंड द थर्ड पर्सन हैज द नॉलेज दैट द अदर पर्सन इज नॉट। ठीक है? एक 26 में डाउट आया है मिस संजना बेन कि सर अदर पार्टनर का मतलब क्या है? लिसन, देखिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप व्हाट वाज द लॉ? If any partner do in the business something wrong, other partner will also be liable for that act because working for all. But in this case, other partner will not be liable for the wrong acts of any partner. ठीक है? किसी एक पार्टनर की गलती के अदर पार्टनर लाइबल नहीं होंगे, एलएलपी लाइबल होंगे। मानसी अभी क्या डाउट है, कौन सा पॉइंट क्या आप कह रहे हो बेटा? आगे बढ़े अपन, सेक्शन सबसेक्शन 2 पे आए। तो मेरे ख्याल से अब नाउ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 इज क्लियर। Sir, LLP is a public document. You can download from the portal. Manohar is saying, sir, ji, it means if I become partner LLP, then I inform to registrar. And if there is no confirmation within 15 days from LLP, then I become partner. Yes. इनका कहना ये है, मनोहर ये कह रहे हैं कि सर मैंने एलएलपी ज्वाइन की, राइट, और एलएलपी ने इन्फॉर्म नहीं किया आरओसी को, मैंने आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया, आरओसी ने कंफर्मेशन मांगा एलएलपी से, एलएलपी ने रिप्लाई नहीं किया, तो क्या मैं पार्टनर माना जाऊंगा? यस, यू विल बी द पार्टनर। वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को, जो लॉ की लैंग्वेज कहती है। मिस्टर जगत इज सेइंग सर इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से any unauthorized activities are undertaken or done by partner, then LLP is not liable for such activities and the partner is personally liable. Yes, यही कह रहे हैं कि अगर कोई अनऑथराइज एक्ट करता है पार्टनर, उसके लिए पार्टनर खुद लाइबल होगा, एलएलपी लाइबल नहीं होगी। ठीक है? एक मानसी की क्वेरी आई है कि सर आपने जो लिखवाया एलएलपी में सबसेक्शन 1 में वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो बेटा मैंने सिर्फ इतना लिखवाया है कि एलएलपी विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट विच इज नॉट ऑथराइज। भाई एलएलपी ने पार्टनर को ऑथराइज ही नहीं किया किसी एक्ट के लिए, तो पार्टनर लाइबल एलएलपी लाइबल नहीं होगी उसके लिए। और ये बात सामने वाले को भी पता हो, सामने वाला मतलब कौन? जिस थर्ड पार्टी जिससे आप एग्रीमेंट करते, क्लियर इतनी बात?
सर इफ थर्ड पर्सन, ये अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम दिस इज गुड क्वेश्चन फ्रॉम हेमलता. सर लिसन केयरफुली बच्चों. If third person is not aware that partner has no authority, then LLP is bound to be liable for the act of a partner. Yes. If third person work in good faith, bona fide, then he can claim from the LLP. But in return, LLP will claim from the partner who is not authorized. सुशील कह रहे हैं सर मैं लेट हो गया, सॉरी बेटा, कोई बात नहीं, आप जो रिकॉर्डिंग लेक्चर उसे आप पढ़ लेना एक बार. Fatih saying lawyer can form the LLP. Yes, they can form. Sir, is any public notice required for wrongful act done by the partner? I don't think so. ये कह रही हैं कि सर कोई पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सबसेक्शन 2, 3 and 4 of section 27. What subsection 2 says? LLP is liable if partner of LLP is liable to any person as a result of a wrongful act or omission on his part in the course of business of LLP or with its authority. क्या कहा इसने? If act is authorized by LLP and the or act is done during the course of business by partner, then LLP will be liable even it was wrongly done. कि अगर पार्टनर ऑथोराइज था, फॉर एग्जांपल सेल करने के लिए ऑथोराइज, फिर भी गलती करता है, गड़बड़ करता है, तो उसके लिए एलएलपी लायबल होगी, बाद में एलएलपी क्लेम कर सकती है उस पर. राइट. सेकंड पॉइंट, sorry, third section, subsection third, obligation of LLP, whether arising in contract or otherwise, shall be solely the obligation of LLP. Means this liability of LLP is only the liability of LLP, not the other partners. Other partner will not be liable in case of liabilities of LLP. Partnership में क्या था? Other partner liable थे, but in case of LLP, other partners are not liable for the liabilities of LLP. And fourth point, from what resource, from what source the liability of LLP will be meet out? The property of LLP की प्रॉपर्टी से वो मीट आउट की जाएगी. राइट. कोई डाउट? ये सिंपल सेक्शन थे. सिंपल सेक्शन थे बेटा. नाउ सेक्शन 28. What section 28 says? Partner is not personally liable for the obligation of LLP. Personally liable means जो असेट उसकी बिजनेस में लगी हुई है, जो पैसा लगा दिया उसने, बस वो वहीं तक लायबल है. He is liable up to the amount of capital contribution or up to the liability he is ready to take in. Personal assets of the partner are never liable for the liability of LLP. Now, partner is personally liable for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of it. Means, if any partner do any wrongful act, LLP can claim the loss from that partner. But any partner of LLP will not be liable for any wrongful act of other partners, because partner is not an agent of other. LLP को लॉस होता है किसी पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट से, तो वही पार्टनर लायबल होगा, LLP उससे क्लेम कर सकती है, लेकिन अदर पार्टनर उस लॉस के लायबल नहीं होंगे. ठीक है. सेक्शन 29, 28 तक कोई डाउट बच्चों? क्या क्वेरी है सर? Is there, Manohar is asking, sir, is there any concept like constructive notice? I don't think so. This concept is in case of LLP. Sir, LLP authorized work done only done by designated partner. देखिए, listen. Any partner can be authorized to any work. The main, even the designated partner or even the normal partners. The role of designated partner is just like a director to sign the documents. अथॉरिटी उनके हाथ में, वो किसी और पार्टनर को ऑथराइज कर सकते हैं किसी काम के लिए. ठीक है. चलिए
मिस्टर रामजा इज राइटिंग एलएलपी में भी स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर होते हैं क्या? नो. नैन्सी इज आस्किंग सर इफ इट वाज ऑन रेंट देन, मतलब एक बार अपनी बात को क्लियर लिखो बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. सर मे आई नो व्हाट इज द बेयर एक्ट? एवरीबडी सेइंग स्टडी बेयर एक्ट अलोन. व्हाट इज कॉल्ड एज बेयर एक्ट? बेयर एक्ट मींस द एक्ट, मतलब केवल जो प्रोविजंस है वही लिखे हुए हैं स्टडी में, ऐसा नहीं है. स्टडी में उसके अलावा एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आप लोगों को. बेयर एक्ट देखिए, जो लॉ है उसे लॉ किसमें लिखा जाता है? एक्ट. एक्ट कॉल्ड बेयर एक्ट. प्रोविजंस, खाली प्रोविजंस है जिसके अंदर, दैट इज कॉल्ड बेयर एक्ट. वही एक्ट आपका लॉ, वही तो लॉ है आपका, वही आपकी स्टडी मॉड्यूल में आएगा. लेकिन साथ में क्या ऐड किया गया? संग एग्जाम्पल, उसका एनालिसिस. ठीक है ना? तो स्टडी तो मॉड्यूल में मस्ट. सर कैन ए माइनर बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी? द आंसर इज नो. सर होल्डिंग आउट वाज देयर इन सेक्शन 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. आई डोंट, पार्टनरशिप एक्ट को मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा बच्चे में. होल्डिंग आउट सेक्शन 29. लेट्स से any person, let's say first person, who by words spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in LP is liable to any person who has on the faith of any such representation given credit to the LP. क्या मतलब हुआ इसका? एक बार रीडिंग कीजिए. Two persons, remember, partnership by holding out. Two persons are standing, one says A, let's suppose two persons are standing A and B in front of Z, and Z says to A that B is partner. Z says that he is B's partner. B reply nothing. It means a partnership arises between B and Z. Any person by words, शब्दों से, बोल के, लिख के या अपने व्यवहार से रिप्रेजेंट करता है कि वो एलएलपी का पार्टनर है, इज लाइबल टू एनी पर्सन. उसकी लाइबिलिटी हो जाती है, वो लाइबिलिटी हो जाएगी अगर उसके बेसिस पर कोई बेनिफिट एलएलपी को मिला है. प्लीज रीड वंस अगेन. एनी पर्सन, लेट्स से फर्स्ट पर्सन, हु बाय वर्ड्स स्पोकन, रिटन और बाय कंडक्ट represent himself or knowingly permits himself to be the represented to be a partner LLP is liable to any person, let's say other person, who has on the faith of any such representation given credit to the. अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट आई एम द पार्टनर ऑफ ए बी सी एल एल पी, I am representing that I am the partner of LLP X ABC LLP, and Mr. X on such belief given benefit, given some credit to LLP, then I am liable for that. अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बार बार लोगों को बता रहा हूं कि मैं एबीसी एलएलपी का पार्टनर हूं, और मिस्टर एक्स ने ये बात सुन के एबीसी एलएलपी कुछ माल बेच दिया, कुछ सामान दे दिया, तो उसके लिए मेरी लायबिलिटी बन जाती है, बिकॉज आई एम द पार्टनर बाय होल्डिंग. क्लियर इतनी बात? However, where any credit is received by the LLP as a result of such representation, the LLP shall be liable to that extent of credit received by it. लेकिन जो क्रेडिट बेनिफिट एलएलपी ने लिया है उसके लिए एलएलपी लाइबल होगी, वो पेमेंट एलएलपी को करना. Where after the partner that the business is continued in the same LLP, his legal representative or estate shall not be liable for any act of the LLP done after his death. अगर किसी पार्टनर डेथ हो जाती है और डेथ के बाद बिजनेस चलता रहता है, तो पार्टनर, जो पार्टनर की डेथ हो गई, उसके लीगल हेयर, उसकी प्रॉपर्टी उस आगे के लॉस की लायबिल नहीं होगी. तो यहां तक रुकिए, फिर आगे बढ़ते हैं. सर इफ ए थर्ड पर्सन इज माइनर, तो थर्ड पर्सन माइनर हो या नहीं हो, व्हाट व्हाट इज द डिफरेंस?
ही इज ऑन राइटफुल पोजीशन, उसको राइट है, लाइबिलिटी नहीं है थर्ड पर्सन की, वो तो राइट क्लेम कर रहा है अपना, राइट। Any partner can manage the office work, but in case any legal compliances, only designated partner responsible. देखिए, other partner is liable to manage the office only after the authority given by the designated partner in on behalf of LLP. अगर किसी पार्टनर को काम करने की अथॉरिटी दी जा रही है ना, तो कौन दे रहा है? LLP। LLP कैसे देगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनकी मीटिंग होगी, मीटिंग मेजोरिटी से डिसीजन पास किया जाएगा, ठीक है। Sir, Nancy is saying, sir, you said that liability can be recovered from a property. Yani liability of LLP will be recovered from the property of LLP. Okay, but if there is if LLP has no property, it means LLP becomes insolvent. तो फिर तो कोर्ट प्रोपोर्शनेट एलोकेशन करेगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा. What kind of credit is extended? What kind of credit? क्रेडिट मीन्स कोई बेनिफिट दिया हुआ एलएलपी को, ठीक है. सेक्शन 30 says unlimited liability in case of fraud. I just give you summary provision and then we will discuss this section. That if the intention of LLP or the partner to fraud with some other person, then liability is unlimited. If an act carried out by LLP or any of its partner with intention to defraud creditor of LLP or any other person or for any fraudulent purpose, the liability of LLP and its partner shall be unlimited. अगर LLP ने ऑथराइज किया हुआ है फ्रॉड करने के लिए या पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया ऑन बिहाफ ऑफ LLP, तो उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अब अनलिमिटेड हो जाएगी. तो लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. Every person who was knowingly a party to above act shall be punishable. जिसको पता है फ्रॉड में इन्वॉल्व है वो, उसके लिए क्या सजा है? 5 साल का रहने खाने का इंतजाम, imprisonment for a term of 5 years and the fine 50,000 to 5 lakhs. But exception is there. LLP shall not be liable if any such partner, designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of it. मतलब fraud is done by the employee, partner, designated partner on his own. अपनी मर्जी से फ्रॉड कर दिया, LLP का नाम लेकर, उस केस में LLP लाइबल नहीं होंगी. Only those the person who make the fraud will be personally liable. ठीक है. अंकुर इज सेइंग, सर इसका मतलब ये हुआ कि उस क्रेडिट के लिए पर्सन एंड LLP दोनों ही लाइबल होंगे. देखिए, जो बेनिफिट LLP ने लिया वो तो वो पे करेगा, अगर LLP पे करेगी. अगर उसके बाद कुछ लॉस होता है तो वो पर्सन जिसने गड़बड़ किया है वो लाइबल होगा. होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? सयान दास सेइंग, सर कैन यू एक्सप्लेन होल्डिंग आउट? होल्डिंग आउट मींस बीइंग, मैम टोल्ड यू, I am representing that I am the partner of LLP, let's say ABC LLP, and Mr. X, third person, on this faith, on this statement, have made a contract and with LLP and given some credit. He has sold the some goods on credit to LLP. Then in that case, Mr. X can claim from me, even I am not partner, but I am partner as building out. ठीक है. मीनिंग ऑफ पिक्चर किसने पूछा मुझसे? नेहा ने. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्चर? मीनिंग पिक्चर ये है कि जिस पर्सन ने फ्रॉड किया, जिस पर्सन ने फ्रॉड किया, जिसने, सारे लोग उससे मांगेंगे, पर तो तुम सबके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. अनलिमिटेड सैलरी, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो कुछ है ही नहीं. अनलिमिटेड लायबिलिटी दैट ऑल प्रॉपर्टीज इज लाइबल और ओनली प्रॉफिट टेकन. नहीं बेटा, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस इवन पर्सनल प्रॉपर्टीज आर लाइबल फॉर फ्रॉड. अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसकी पर्सनल एसेट भी लाइबल होंगी. ठीक है. आर लीगल हेयर ऑफ पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट? नो, डेथ के बाद तो बात ही खत्म हो गई.
Whistleblowing section 31, reduction penalty. The court or tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of LLP if it is satisfied. यानी कोर्ट या ट्रिब्यूनल उस पेनल्टी को कम कर सकती है, खत्म कर सकती है, तब जब वो सेटिस्फाई हो जाए. व्हाट सेटिस्फेक्शन? Such partner or employee of any LLP has provided useful information during the investigation, or when any information given by any partner or employee leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted under this act or any other. I think A point is very much clear to you that अगर एम्प्लॉय ने इन्वेस्टिगेशन में मदद की है, पार्टनर मदद की है, तो उसकी पेनल्टी कम कर सकते हैं. भाई आपको पेनल्टी लग रही है लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे हो, तो आप पेनल्टी कम कर सकते हैं. और जो इंफॉर्मेशन, व्हेन एनी इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर बी, गिवन बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय लीड्स टू एलएलपी, एलएलपी से कंसर्न है या पार्टनर से कंसर्न है, कौन से पार्टनर? जो कन्विक्टेड हुआ है. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, नो डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टनर्स. मतलब क्या हुआ कि जिस पार्टनर ने इन्वेस्टिगेशन में गवर्नमेंट की मदद की है, द पार्टनर हु हैज, पार्टनर और एम्प्लॉय हु हैज हेल्प द इन्वेस्टिगेशन टीम or tribunal or court, he will not be discriminated in the firm. No partner or employee of any LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed, or in any other manner discriminated against the terms and conditions of his LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided. यानी सबसेक्शन 1 में अगर इंफॉर्मेशन दी है उसने कोर्ट ट्रिब्यूनल को कि एलएलपी वाले कह रहे हैं अच्छा हमारी इंफॉर्मेशन देते हो तुम, तो मैं हम निकाल देंगे, ऐसा नहीं कर, बिकॉज दैट पर्सन इज जस्ट हेल्पिंग द कोर्ट. चले इतनी बात. ठीक है. सो नाउ टाइम फॉर पेनल्टी शूट आउट. स्टार्ट करें. आज बहुत है बच्चे पढ़ने के लिए, तैयार रहो. अभी ब्रेक नहीं लेंगे, इसके बाद ब्रेक लेंगे अपन अबाउट 7:30 पर. ठीक है. मेहरीन इज आस्किंग सर ब्रेक दे दो. अरे बेटा थोड़ा सा रुक जा, कहाँ जाना है तुझे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. In case of LLP, the partners are agent of LLP, other partners both A and B, none of the above. सारे आंसर एक बार में भेजना बच्चों. LLP, other partners both A and B, none of the above. Second question. In case of any change in name or address of any partner, LLP shall inform registrar within 7 days, 10 days, 15 days, 30 days. कौन किसको इन्फॉर्म कर रहा है? प्लीज ध्यान से पढ़ना बच्चों. In case of any change in the name or address of any partner, that a partner shall inform LLP within 7 days, 10 days, 15 days, 30 days. Fourth question. Person shall cease to be a partner of LLP on his death or dissolution of the LLP if he is declared to be unsound mind by a competent court, if he has applied to be adjudged as an insolvent or declared as an insolvent, all of the above.
Next question. Even after cessation of a partner from LLP, partner will not be liable for any obligation. Yes, partner will still be liable for any obligation which he incurred while being a partner. Both of the above, none of the above. Please read carefully. Tricky question है ये, इसका आंसर ध्यान से देना बच्चों. Last question. Where a partner of LLP ceases to be a partner, the former partner shall be entitled to receive from LLP amount equal to capital contribution, his right to share in his accumulated profit of LLP, both, none of the above. Mr. Jagat SR is asking, sir, yesterday itself I solved all book back questions, sir, and reading the Bare Act I can able to solve all the solutions, sir. Is it enough, sir? I think this is enough. आपको देखिए, please listen. Your study module is Granth. It's just like C. इसको complete कर लो, everything will be for you, right? तो स्टार्ट करते हैं. अभी तक आंसर जो आने शुरू हो गए, क्या आंसर आ गए? चलिए अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ. In case of LLP, the partners are agent of LLP. Time limit 30 days, LLP to ROC. 15 days, partner to LLP. All the above. The tricky question, both conditions are correct. ठीक है. And last question, C is the right answer. So let's check. First one who has given all the correct answer is Miss Meenakshi Tripathi. Congratulations. Second one is Mr. Sundaran. Congratulations. Third one is Mr. Harsh Singh. Congratulations. And Mr. Anmol Patwa. Congratulations. So all of you, congratulations who has given all the correct answers. अभी ब्रेक नहीं लेंगे, 15 मिनट के बाद ब्रेक लेंगे, कोई बात नहीं. प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, मुझे मालूम था डाउट आएगा आपको. देखिए व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 5. इवन आफ्टर सेसेशन ऑफ पार्टनर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन. ये बात सही हो गई, ठीक है. बट बी पॉइंट भी एप्लीकेबल होगा, तो ए और बी दोनों पॉइंट एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर. ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ टॉपिक इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फर्म. तो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, section 32 says what may be the contribution to the firm. A contribution of partner may consist of tangible assets, movable assets, immovable assets, intangible property or other benefits, including money, promissory note, other agreements to contribute cash or property,
and the contract for service performed to be service performed or to be performed. तो क्या क्या हो सकता है कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में? asset, movable, immovable, tangible, intangible, money, promissory note, agreements. But question is how they are included in the books. The second point says the monetary value of such contribution of each partner shall be accounted and disclosed in the accounts of LLP in the manner as prescribed by the rules. क्या कहा कि जो भी दे रहे हैं उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू, और उसको बुक्स में लिखा जाएगा कि ये इतनी असेट है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर इतनी बात? सेक्शन 33 सेज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी और अदर प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट or to perform services for LLP shall be as per the LLP agreement. Obligation means liability. The liability of partner, or duty of partner to contribute money or other property or other benefit or to perform services for LLP shall be as per LLP agreement. तो कितना contribute करेगा ये तय होगा LLP agreement के साथ. What is given in the LLP agreement, according to that a partner has to contribute in the fund. A creditor of LLP which extend credit or otherwise acts in reliance on an obligation described in the agreement without notice of any compromise between partners may enforce the original obligation against such partner. Please read point number 2 once again. I will explain. एक बार पढ़ लो बच्चों पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा घुमा के है पर मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्या कह रहा है? फर्स्ट, एक सेकेंड, सी एनी कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टनर्स. पहले इस पॉइंट को समझते हैं. फर्स्ट वी डिस्कस दिस पॉइंट. एनी compromise between the partners. Let's suppose ABC 3 partners and agreement में कुछ original लिखा हुआ था. They all are liable, all are equally liable for the loss, for the liabilities, but there is compromise between the partners as per the court that suppose Mr. A, B will contribute 40% and Mr. C will contribute 20%. But before this compromise, all the partners are equally liable. ठीक है? Compromise हुआ, compromise से पहले तीनों पार्टनर equally liable थे. ठीक है? उसके बाद compromise हुआ तो क्या 40-40-20 आ जाएगा. अब लेट सपोज क्रेडिटर को इस कंप्रोमाइज की जानकारी नहीं है. If creditor has no any knowledge of this compromise, he can claim as per the original agreement. Some of you asked what is the meaning of extend credit. Means creditor है but he extend, मतलब कुछ और भी ऐसी liability creditor liability बढ़ा दी उसके ऊपर, फर्म के ऊपर. ऑलरेडी creditor है, कुछ और बढ़ गया. But creditor has no knowledge about the compromise between the partners, then he may enforce the original obligation against him. किसा वो क्लेम कर सकता है, उसको एक मौका दिया गया. इतनी बात. ऋतुराज, आप किस क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर डालना बेटा एक बार आप ऋतुराज, फिर मैं आपकी बात कर लेता हूं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट. सेक्शन 34. व्हाट इट सेज that LLP shall maintain such books as prescribed, such prescribed books for accounting relating to its affair for each year separately of its existence, even on cash basis or on accrual basis, and according to double entry system
and shall maintain the same books at its registered office for the prescribed period. Prescribed period means prescribed by the rules. ठीक है, क्या कहा इसमें कि एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, बनाने हैं ईयरली बेसिस पर. कैश भी हो सकता है, एक्रूअल भी हो सकता है, बट नॉर्मली एक्रूअल चाहिए. डबल एंट्री सिस्टम पे करना है और उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करके रखना है. सेकंड, every LLP shall within 6 months from the end of the each financial year, yani up to the 30th September, within 6 months from the end of the each financial year, prepare a statement of account and solvency for the said financial year and shall be signed by the designated partner of LLP. Statement of account and solvency, you may say the financial books, balance sheet. 6 महीने के अंदर बुक्स को तैयार करना है, ऐसे अपनी को बैलेंस शीट रेडी करना है कि हम क्या पोजीशन है. एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन प्रेस्क्राइब्ड फीस. एंड दिस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड सॉल्वेंसी, यू मे कॉल द बैलेंस शीट, विल बी फाइल्ड टू रजिस्ट्रार एवरी ईयर इन द वे प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस. कोई डाउट यहां तक? ऋतुराज, आपका क्वेश्चन नंबर 5 में अभी लेता हूं, है ना? थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अभी ब्रेक से पहले ले लूंगा क्वेश्चन. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, these accounts should be audited. However, central government by notification in the official gazette exempt any class or classes of LLP from audit. Audit होना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो exempt कर सकती है. Sir, audit of LLP is compulsory? Yes, definitely. Point subsection 4 says, according to section 34 subsection 4, audit is compulsory, right? But central government exempt by notification for any particular class of LLP. Penalties for non-compliance of subsection 3. What subsection 3? Should be filed to ROC. Balance sheet should be submitted to ROC. What is the penalty? 100 rupees per day, subject to maximum 1 lakh. On partners, 100 rupees per day, subject to maximum 50. Right? Penalty for non-compliance of provisions of subsection 1 to 4. 1, account maintain. 6 months में आपको बैलेंस शीट बनानी है आपको. And 4, audit. Penalty LLP 25,000 to 5 lakhs and designated partner 10,000 to. Done. Accounting and auditing standard, section 34 subsection A. The central government may, in consultation with a new authority है, National Financial Reporting Authority, in short NAFRA, prescribe the accounting standard, prescribe the auditing standard recommended by ICAI. ICAI recommend करेगी auditing standard को, वो prescribe कर देगी, उसको पावर दी गई है NAFRA को. मगर सेंट्रल गवर्नमेंट NAFRA से कंसल्ट करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू कर. बेटे अभी डिस्कस किया अनमोल, प्लीज आपने सुना नहीं मेरी बात. You are asking what is the statement of account and solvency. I told you beta, it is just like a balance sheet, financial statement. ठीक है ना? जगत बड़ी जल्दी है बेटा आपको. Whether we will solve MTP और RTP in class? नहीं बेटा, MTP RTP नहीं करेंगे क्लास में, इतना टाइम नहीं है, ये आपको सॉल्व करने हैं खुद. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एनुअल रिटर्न सेक्शन 35 से एनुअल रिटर्न जो हमें फाइल करना है, विच टू बी फाइल्ड टू ROC. Every LLP shall file an annual return with ROC within 60 days of the closure of financial year in the prescribed form and manner with prescribed fees. एक एनुअल रिटर्न सबमिट करना है, उसमें इंफॉर्मेशन जाती है, who are the partners, changes of partners, ये इंफॉर्मेशन जाएगी कहां पर? ROC. Let's suppose for the financial year of LLP closes on 31st March 2022, then LLP has to file the annual return with the registrar latest by 30th
May 2022, that is up to 60 days from the end of the financial. Penalty in this section on LLP, 100 rupees per day up to rupees 1 lakh. And every designated partner, 100 rupees per day, maximum total 50,000. Right? Any doubt on this point till now? Inspection of documents kept by registrar, section 36. छोटे-छोटे sections हैं. The small sections are here. The incorporation documents, name of partners, changes, if any, made therein, statement of accounts and solvency, annual return filed by each LLP with registrar shall be available for inspection by any person. कोई भी आके देख सकता है. In such manner and on payment of such fees as may be. क्या क्या चीज देख सकते हैं? डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, कौन पार्टनर है, उनमें क्या चेंजेस हुए. बैलेंस शीट, you may call the balance sheet financial statement, that is the statement of account and solvency. Annual return, जो भी फाइल किया गया एलएलपी के द्वारा, उससे देख सकता है कोई भी आदमी एलएलपी को फीस दे. पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपने कोई झूठा स्टेटमेंट दिया है, झूठ बोला तो पकड़ा जाएगा. झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा, कौवा नहीं काटेगा, यहाँ पे आरओसी काटेगा. ठीक है, क्या पेनल्टी है? इफ एनी पर्सन मेक्स ए स्टेटमेंट which is false in any material particular, knowing it to be false, जानबूझ के आपने गलत चीज बताई, और which omits any material fact, omit छिपा दिया जानबूझ के. गलत बताना या सही चीज छिपाना दोनों ही क्राइम है. उसके लिए imprisonment up to 2 years, यानी रहने खाने का इंतजाम 2 साल के लिए, और फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम फाइन 5 लाख. यहां तक कोई डाउट किसी को? एनीबडी हैज डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों. सर, इफ दे रिक्वायर्ड टू गेट स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस, वही हम बात. स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है? कंपलसरी ऑडिट, एंड दैट इज कंपलसरी इन सेक्शन 34, राइट? Mr. Ramja is asking, sir, which registrar government approved registration office or company registered office? Document registrar means Ministry of Company Affairs से रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक ही ऑफिस है रजिस्ट्रार का. तो बेटा दिव्या करिए फ्री का खाना है वहां पर. वेरी गुड, अच्छी सोच है. चलो आगे बढ़ते हैं. पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 38. The registrar may require any person including any present or former partner. Liability खत्म नहीं हुई फर्म से जाने के बाद भी. Registrar may require any person including present or former partner or designated partner or employee of LLP to answer any question, make any declaration, supply any details or particulars in writing to him within reasonable period. रजिस्ट्रार तो माई बाप है भाई. वो किसी भी पार्टनर से अभी है, पहले था, एम्प्लॉय है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिक्लेरेशन चाहिए, मांग सकता है, टाइम देगा उसके लिए, एंड दे हैव टू सबमिट दैट इंफॉर्मेशन. बिकॉज व्हाट सबसेक्शन 2 सेज, if above person does not reply or registrar is not satisfied. आपने रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई किया तो रजिस्ट्रार समझ में नहीं आया भाई. With the reply or declaration of details or particular provided, the registrar shall have power to summon the person to appear before. Summon is legal order. Legal order to be present. Legal order भेज सकता है, कोर्ट ऑर्डर को बोलते हैं समन, प्रेजेंट होने के लिए. तो समन को भेज सकता है, भैया आ जाओ तुम यहाँ पर, इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम खुद आओ. And any person who without lawful excuse fails to comply with any summon, punishable with fine 2,000 to 20,000.
फाइव। ठीक है, 2,000 से 25,000 रुपए की उसके ऊपर क्या आ जाएगी, पेनल्टी आ जाएगी। सर कैन देयर बी क्वेश्चन रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ फीस इन द एग्जाम? क्या फीस पूछ सकते हैं एग्जाम में? आई डोंट थिंक सो। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि मेंशन ही नहीं है फीस कितनी है, हम तो प्रेस्क्राइब फीस लेके चल रहे हैं। हर्ष कह रहे हैं सर कोई डाउट ही नहीं आ रहा सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अच्छी बात है, आप जगे हुए हो। सर इज देयर एनी टर्नओवर लिमिट टू गेट एग्जाम्पशन फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट? आंसर इज नो। ऑडिट इज कंपलसरी इवन द टर्नओवर इज निल। ठीक है, तो एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, ऋतुराज की प्रॉब्लम थी। ऋतुराज जब हम ब्रेक के बाद मिलेंगे सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है। एट दिस प्लेस वी आर गोइंग फॉर द ब्रेक ऑफ 10 minutes, and this is now 7:31, and we will meet at 7:41. And first of all I will take the question number 5 in super over 1, super over 3, जो super over 3 में था क्वेश्चन 5, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एट दिस प्लेस वी आर टेकिंग द ब्रेक ऑफ 10 minutes। ओके।
ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, एक क्वेरी थी आप लोगों की इन क्वेश्चन नंबर 5 कि सर इसका ऑप्शन अभी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। लिसन, फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट विदाउट हैविंग एनी ऑप्शन। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या आंसर होगा? क्वेश्चन इज, even after cessation of a partner from LLP, partner will not be liable for any obligation. सेसेशन के बाद पार्टनर लाइबल नहीं होगा? आंसर इज यस। तो यस तो ए। अब कम टू द ऑप्शंस, ए इज द राइट चॉइस, क्लियर, बट बी इज आल्सो द चॉइस, because what B says, partner will still be liable for any obligation which is incurred while being a partner. कि अगर जिस समय पार्टनर था उसके लिए वो लाइबल हो जाएगा। तो ए क्या कहता है कि पार्टनर लाइबल नहीं होगा, एक आंसर सही है बिल्कुल। बी भी सही है, एक एक्सेप्शन के साथ आया। एंड राइट चॉइस क्या होगी इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में? सी, विच सेज बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ऋतुराज, आई थिंक यू आर क्लियर नाउ। मनोहर यादव जी का क्वेश्चन है, सर एक्ट गेव अस 6 months फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड द सेम कैन बी फाइल्ड इन एनुअल रिटर्न। नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज आपका क्वेश्चन क्या है? दुआ सुनिए बच्चों का क्वेश्चन। एक्ट गेव अस 6 months फॉर प्रिपरेशन of statement of account and solvency, and the same can be filed in annual return within 60 days. I am getting confused for both. Listen, in annual return you need not to file the statement of account and solvency. उस 2 महीने वाले स्टेटमेंट में अकाउंट्स और स्टेटमेंट नहीं जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से। ऑडिटेड आपको 6 महीने में करानी है, तो 6 महीने में अंदर सबमिट करने हैं। एनुअल रिटर्न में आपको ये स्टेटमेंट सबमिट नहीं करना। क्लियर? Priya is saying, because sir in the question any word is also mentioned. I'm not understand what you want to say बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, वापस लौटते हैं इस पॉइंट पर। Sir, who will sign the statement of account and solvency? Obviously designated partners. Now compounding of offenses, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा यहां से। The regional director or any other officer not below the rank of regional director authorized by central government. तो अथॉरिटी कौन है? रीजनल डायरेक्टर और एनी अदर डायरेक्टर, एनी अदर पर्सन, अदर ऑफिसर should not be below the rank of regional director authorized by central government, who may compound any offense which is punishable with fine only by collecting that fine. Please read it again. रीजनल डायरेक्टर को पावर है वो ऑफेंस जिसमें केवल पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसे वो कंपाउंड कर सकती है, खत्म कर सकती है बाय रिसीविंग द फाइन। ठीक है? Nothing contained in subsection 1 shall apply to any offense committed by LLP or its partner or its designated partners within a period of 3 years from the date on which similar offense committed by it or him was compounded under this section. घुमा दिया इसने थोड़ा सा, क्या कह रहा है ये पॉइंट नंबर 2? नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई। पहली चीज तो यानी कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है, इट मींस कंपाउंडिंग नॉट पॉसिबल, बिकॉज सबसेक्शन 1 इज सेइंग फॉर कंपाउंडिंग, compounding not possible. Clear? In which case same offense
कंपाउंडेड जस्ट विद इन 3 years बैक। 3 साल के अंदर दोबारा करने आ गए आप। पहले आपको कंपाउंडिंग करा दी, 3 साल के अंदर खत्म करा दिया, ठीक है। 3 साल के अंदर दोबारा कर लिया, तो अब दोबारा वो कंपाउंड नहीं होगा अगर आपने वो 3 साल के अंदर रिपीट किया। इफ यू हैव रिपीटेड द ऑफेंस इन 3 years, then no compounding is there. Clear point? Third point, every application for compounding of offense shall be made to the registrar. Application registrar को जाएगी, application to be submitted to registrar, and who shall forward the same together with his own comments to regional director or other authorized officer not below the rank of regional director as the case। यानी कि पहले एप्लीकेशन किसको जाएगी, आरओसी को जाएगी। आरओसी अपनी बात ऐड करके, अपनी टिप्पणी ऐड करके कहां दे देगा वो, रीजनल डायरेक्टर को या अदर ऑथोराइज ऑफिसर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज। क्लियर? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, where any offense is compounded under this section, whether before or after the institution of any prosecution, intimation thereof shall be given to the registrar within a period of 7 days from the date on which offense is so compounded. Please read once again. दोबारा पढ़िए इसको बच्चों। क्या लिखा है? Where any offense is compounded under this section, section number of compounding the offense, whether before or after the institution of any prosecution, prosecution हमने सबमिट कर दिया, हो गया चालू, then मतलब प्रोसिक्यूशन से पहले या प्रोसिक्यूशन होने के बाद, intimation thereof shall be given to registrar within a period of 7 days। ऑफेंस कंपाउंड हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन आरओसी को दी जाएगी 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ विच ऑफेंस इज कंपाउंडेड। यानी कि even prosecution has been started or not, offense is compounded, then it should be intimated, it should be informed to ROC within 7 days from the date of order when of compounding। क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कंपाउंड हो गया, ऑफेंस कंपाउंड हो गया, राइट, तो उसकी इंफॉर्मेशन 7 दिन के अंदर आरओसी को भेजनी है, जिस दिन वो डेट ऑर्डर आएगा, राइट। अब ये जो इसमें इस बीच में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ हो या नहीं हुआ, उससे कोई मैटर, ठीक है। वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर, नाउ पॉइंट नंबर 5 इज कंसर्न विद 4, where any offense is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offense। क्या कह रहा है ये? Where any offense is compounded before the institution of prosecution, prosecution start होने से पहले ही कंपाउंड हो गया तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? Where the compounding of any offense is made after the institution of any prosecution, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, such compounding shall be brought to the registrar in writing to the notice of the court, by the registrar in writing to the notice of court in which prosecution is pending, and on such notice of compounding of offense being given, the offender in relation to which offense is compounded shall be discharged। यानी कि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस केस में आरओसी की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट को इन्फॉर्म करे। It is responsibility of ROC to inform the court, and court will consider the latter for offense or compounding of offense, and that person will be discharged। ये सिंपल सी बात है। कंपाउंडिंग हुई, आफ्टर में सेटलमेंट हो गया, ठीक है, ये बात हो गई। अब प्रोसिक्यूशन कोर्ट में स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, प्रोसीडिंग्स जो है वो कोर्ट में स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई। अगर नहीं हुई है तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होना ही नहीं है, पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन का काम खत्म। प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो आरओसी जिम्मेदारी बनती है, आरओसी कोर्ट को इन्फॉर्म करे जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, और वो उस कोर्ट में क्या होगा,
वो आदमी डिस्चार्ज कर दिया जाए। क्लियर इतनी बात। 7th पॉइंट, regional director or any other officer not below the rank of regional director authorized by central government may direct any partner, designated partner, or other employee of the LLP to file or register such return account or other document within such time as may be prescribed in the order on payment of the fees. यानी कि कंपाउंडिंग किसके पास है? Who has the right of compounding? Regional director or other officer authorized by central government. He can ask the information in the form of written accounts, other documents, and that have to be submitted by partner, designated partner or employee जिससे वो चीजें मांगी जाए. Please read once again point number 7. जब तो मैं आपकी क्वेरी देख रहा हूँ बच्चों, एक मिनट. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट, if any partner or designated partner or other employee of the LLP who fails to comply the above requirement, our requirements, requirement given in subsection 7, the maximum amount of fine shall be the twice of the amount provided in corresponding section in which punishment for such offense. जो भी सजा होगी इसको डबल करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा. पर जिस पार्टनर के ऊपर ऑफेंस चल रहा है, इस पार्टनर ने ऑफेंस किया है, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है, उस पर जो पेनल्टी लगनी है वो डबल हो जाएगी अगर हम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो. ठीक है. आपकी क्वेरी क्या आती है? क्या क्वेरी आई पहले? Sir, Priya is saying, sir, I was saying in 5th question, answer is both. Yes, I have discussed बेटा, both ही आएगा इसमें तो. यहाँ तक कोई क्वेरी बेटे कंपाउंडिंग में कोई डाउट किसी को प्लीज पूछिए, मैं डिस्कस करूँ आगे. कंपाउंडिंग में कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं डिस्कस करूँ आपसे फिर आगे. चलिए. असाइनमेंट और एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स. सेक्शन 42 is concerned with compounding means settlement करना. You can say settlement, right? प्रोसिक्यूशन मीन सजा के प्रावधान चल रहा है, उसको प्रोसीडिंग करना, उसकी काम करना, आगे बढ़ना, सजा जो सजा मिलनी है या उसको मतलब जो फाइन लगना है उस पर कंटिन्यू उसकी प्रोसीडिंग्स करना, उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग. ठीक है. पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट सेक्शन 42. क्या पार्टनर अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है? द पार्टनर हैज एनी राइट टू शेयर हिज इंटरेस्ट इन द एलएलपी. सेक्शन 42 डील्स विद इट. व्हाट इट सेज, the right of a partner to share of profit and loss of LLP and to receive distribution of in accordance with the LLP agreement are transferable either wholly or in part. Means जो उसका right है, the right of sharing profit and receiving the capital contribution from the LLP is transferable wholly or in part. आप पूरा भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को और पार्ट भी ट्रांसफर किया जा सकता है. The transfer of any right by any partner pursuant to subsection 1 does not itself cause the disassociation of partner or dissolution and winding up of the LLP. Suppose I am a partner in LLP and I am the sharing 25% in the profit of LLP, and I want to transfer my 5% share out of 25% to Mr. A. I can do. ठीक है. But in that case, it doesn't mean I am not the partner. It doesn't mean the fund will be dissolved. It doesn't mean the fund will be winding up.
ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, the transfer of right pursuant to this section does not by itself entitle the transferee or assignee to participate in the management or conduct of the activities of the LLP or access information concerning the transaction of LLP. Suppose I am transferring my 5% share out of 25% in LLP to Mr. X, but it doesn't mean that X has right to interfere in the management or conduct of the business activities of the LLP. मेरा 25% शेयर है एलएलपी में, मैं अपना 5% शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूं किसको, एक्स को, यानी कि जो भी मुझे मिलेगा 25% उसका, उसमें से 5% किसको मिलेगा, उसमें किसको मिलेगा, मिस्टर एक्स को। आई कैन डू सो, आंसर इज यस, बट इस केस में एक्स को ये राइट नहीं मिल गया कि वो एलएलपी के बिजनेस में आके इंटरफेयर करेगा। मैं ही काम करूंगा बिजनेस में, मैं इंटरफेयर कर सकता हूं बिकॉज आई एम। सेकंड थिंग इज, इस ट्रांसफर से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, बाइंडिंग अप नहीं होगी। क्लियर इतनी बात। Conversion from a firm into LLP, section 55, as per the second schedule we have discussed in the last class. Conversion from private company to LLP, section 56, third schedule, according to third schedule, and conversion from unlisted public company into LLP, section 57, क्या कहता है, as per schedule number 4, fourth schedule। ठीक है, एक डाउट आया है अंजलि का, point number 8 of compounding of offense, just taking. She say, please listen, Anjali. See what the point number 8 says. If any partner or designated partner or other employee of LLP who fails to comply above requirements, above requirement means requirements which is made by a regional director in point number 7, then maximum amount will be the twice of basic penalty. जो बेसिक पेनल्टी थी उसका ट्वाइस हो जाएगा अगर आप उसको कॉपरेट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड एनफोर्स इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन, सेक्शन नंबर 58। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट a firm or a private company or an unlisted public company, as the case may be, has complied with the provisions of various schedules, schedules second, third, and fourth, whatever the case, provisions of this act and rules made thereunder, registered the documents and issue a certificate of registration stating that the LLP is registered under this act from the date specified in the certificate. I want to convert my partnership firm into LLP. Okay, I have to submit the document as per schedule number 2. And if ROC is satisfied, registrar is satisfied that okay, documents are complete, all the formalities have been completed, now it can issue a certificate of registration of LLP. यानी कि अब क्या होगा, वो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, LLP हो जाएगी। क्लियर, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट विच वाज मेंशन्ड on certificate of incorporation. Now, within 15 days of registration of conversion, within 15 days of registration of conversion, LLP shall inform registrar of firms, अगर firm थी तो, पहले company थी तो registrar of companies, about now we are converted into LLP, अब हम LLP बन गए, हमने आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये हमें मिल गया, अब आप अपने घर, हम अपने घर। यानी कि अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या बन गए हैं, अब LLP बन गए हैं, हम पुराना घर छोड़कर नए घर में आ। ठीक है, अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स, shareholders of the private company or the unlisted public company, as the case may be, the LLP
to which such firm or such company is converted and the partners of LLP shall be bound by the provisions of various schedules as the case may be. बहुत सिंपल सी बात है, एक जनरल बात कह रहा है इसमें। क्या कह रहा है कि कन्वर्जन के बाद अब आप एलएलपी के प्रोविजन फॉलो करेंगे जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप बने। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन इनटू एलएलपी issued under various schedules, second, third, fourth. What are the effects? There shall be a LLP by name specified in the certificate of registration. अब LLP आ गई किस नाम से, जो रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है। All properties, tangible, intangible, movable, immovable of the firm, of the company now will be the asset and asset will of LLP. So what subsection 2 says? All tangible, movable, immovable, intangible property vested in the firm of the company as the case may be, all assets, interest, right, privileges, liabilities, obligations relating to the firm or the company as the case may be, and the whole of the undertaking of the firm which means undertaking or of the company as the case may be shall be transferred to and shall vest in the LLP. अब वो LLP हो जाएंगे। जो पहले लायबिलिटीज असेट किसकी थी, फर्म की या कंपनी की थी, अब वो किसकी हो जाएंगी, LLP की हो जाएंगी। भाई जब आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं तो सारा सामान लेके जाएंगे नहीं जाएंगे आप। ठीक है। फर्म और कंपनी एज द केस में बी शैल बी डीम टू बी डिसॉल्व। पहले क्या थे आप, फर्म थे, डिसॉल्व हो गए, अब आप LLP बन गए। पहले क्या थे, कंपनी थे, नाउ यू आर डिसॉल्व बिकॉज यू आर नाउ LLP। क्लियर इतनी बात। फॉरेन LLP, फॉरेन LLP कौन क्या होती है, द LLP विच इज incorporated, registered outside India but having place of business in India. So section 59 of LLP Act deals with foreign LLP. What it says, central government may make rules for provisions in relation to establishment of place of business by foreign LLP within India and carrying on these business therein by applying or incorporating with such modifications as appear appropriate the provisions of Companies Act 2013 or such regulatory mechanism with such composition as may be. सिंपल सा लॉ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स फॉर फॉरेन LLP। कितना कंपनी एक्ट का एप्लीकेबल होगा, कितना और प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर इतना पॉइंट। अब आपकी क्वेरी ले लूंगा बच्चों जहां तक। सर, कैन ए पार्टनर ट्रांसफर इज शेयर टू ए इंडिपेंडेंट पर्सन who is not in relation to LLP? Priya is asking. The answer is yes. क्या सर हम कोई पार्टनर अपना शेयर किसी इंडिपेंडेंट को ट्रांसफर कर सकता है जो LLP से कनेक्टेड नहीं है? यस कर सकता है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है LLP एक्ट में। सर ऐसी क्या वजह हो सकती है, ये केशव जी पूछ रहे हैं, कि कोई अपना प्रॉफिट किसी को और किसी और को ट्रांसफर करेगा, क्या टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से या कोई और रीजन हो सकता है? देखिए टैक्स सेविंग का तो कोई पॉइंट बनता नहीं है इसमें। ठीक है। ट्रांसफर करने के लिए मान लीजिए आप किसी को अपने कोई किसी रिलेटिव को कर रहे हैं, किसी फ्रेंड को कर रहे हैं, कुछ अपना चाहते हैं कि वो भी इसका हिस्सा बना रहे, इसलिए कर सकते हैं। राइट। संतोष दास जी कह रहे हैं ग्रेट सर, किस बात के लिए कह रहे हैं सर, बता दो पूरी बात तो बताओ। नाउ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ LLP। आपस में झगड़े हुए सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कुछ लॉस हुआ है, अरेंजमेंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या कुछ नए तरीके से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं LLP। ठीक है। नैन्सी कह रही है सर मेरी प्रॉब्लम, सर बेटा मैं भूल गया तेरी प्रॉब्लम, मुझे तो एक बार उसका स्टडी का पेज नंबर बता देना,
मैं अभी जो हमारा क्वेश्चन का रहेगा उससे पहले ले लूंगा आपकी प्रॉब्लम नैन्सी, ठीक है बेटा? आप ध्यान रखना, मैं नोट कर ले रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम। आपका जो स्टार्ट होंगे क्वेश्चन उससे पहले ले लूंगा बेटा आपकी प्रॉब्लम, ठीक बेटिया? सर क्या टैक्स पार्टनर पे करते हैं या एलएलपी ऑन इनकम? टैक्स पार्टनर पे करते हैं एलएलपी ऑन इनकम। देखिए, एलएलपी की इनकम एलएलपी की है, तो एलएलपी की इनकम पर टैक्स कौन पे करेगा? एलएलपी पे करेगी बेटा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी सेक्शन 60, राइट? वेयर ए कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज है बिटवीन एलएलपी एंड इट्स क्रेडिटर। एलएलपी और क्रेडिटर के बीच में हिसाब किताब का कुछ अरेंजमेंट करना है, कंप्रोमाइज करना है। और बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर्स, एलएलपी और पार्टनर्स बीच में कुछ कंप्रोमाइज करना है। नाउ द ट्रिब्यूनल में, which is tribunal, remember definition, National Company Law Tribunal, NCLT, tribunal on the application of LLP or of any creditor or partner of LLP, or in case of LLP which is being wound up, of liquidator। कौन कौन अप्लाई कर सकता है कंप्रोमाइज के लिए? पहला पॉइंट, हु कैन अप्लाई फॉर कंप्रोमाइज? LLP, creditor, partner, और if LLP is going to be wind up, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, देन लिक्विडेटर। ऑर्डर ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और ऑफ पार्टनर्स टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कनेक्टेड इन प्रेस्क्राइब मैनर और एज द ट्रिब्यूनल। प्रेस्क्राइब मैनर मींस प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, और या ट्रिब्यूनल के जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग एक मीटिंग कॉल की जाएगी। क्या लिखा है इस सबसेक्शन 1 में? ठीक है नैन्सी, मैंने नोट कर लिया बेटा आपका पॉइंट, है ना? मैं भी डिस्कस करता हूँ। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि कंप्रोमाइज अगर प्रपोज हो रहा है क्रेडिटर के बीच में, एलएलपी के बीच में, या एलएलपी और पार्टनर के बीच में, इन दैट केस ऑन द एप्लीकेशन कौन कर सकता है अप्लाई? एलएलपी, पार्टनर्स, क्रेडिटर्स और लिक्विडेटर। ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा मीटिंग के लिए, मीटिंग कहीं किसी क्रेडिटर की और पार्टनर्स की, जो भी होगा, किस वे में? एज पर प्रेस्क्राइब रूल्स और एज ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया रिगार्डिंग द कॉलिंग ऑफ मीटिंग, ठीक है? सबसेक्शन 2 क्या कहता है? if 3/4 in the value, 3/4 in the value of creditor और पार्टनर्स, जैसा भी केस है कंप्रोमाइज पार्टनर्स के बीच में है या क्रेडिटर के बीच में, तो जो भी है जिनके बीच में 3/4 वैल्यू उनकी, एज द केस मे बी, एग्री टू एनी compromise or arrangement, it shall, if sanctioned by tribunal, be binding on all the creditors or all the partners and also on the LLP, or in case of LLP which is being wound up on the liquidator and contributories of। क्या मतलब? कि मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में वोटिंग कराई गई कॉम्प्रोमाइज के लिए और 3/4 एग्री हो गए। अगर क्रेडिटर की मीटिंग है तो क्रेडिटर एग्री हो गए, पार्टनर्स की मीटिंग है तो पार्टनर्स एग्री हो गए। इफ 3/4 in value are agree, then it means compromise has been passed and it will be applicable to all the creditor or partners, even those are not agree for compromise। Means if 3/4 are agree, 1/4 are not agree, 3/4 are agree, 1/4 are not agree, it means it will be applicable to all the creditors, including 1/4 who are not agree। 3/4 हो गए, पास हो गया, तो जो एग्री नहीं है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? यहां तक कोई डाउट किसी को इस पॉइंट में? नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सेप्शन। प्रोवाइड तो क्या कहता है? ट्रिब्यूनल शेल मेड ऑर्डर सैंक्शनिंग एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट ओनली इफ being satisfied that
LLP or any other person by whom application has been made under subsection 1, application to tribunal for compromise, has disclosed, has submitted by affidavit or otherwise all material facts relating to the LLP, including the latest financial position of LLP and the pendency of any investigation proceedings in relation to LLP. क्या कहा प्रोवाइजो ने? ऑर्डर ट्रिब्यूनल जब ही करेगा जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि जिसने भी एप्लीकेशन दी थी कंप्रोमाइज की उसने सारे मेटेरियल फैक्ट्स सबमिट कर दिए हैं, इंक्लूडिंग financial position of LLP, or if any investigation is in continuance, is continuing against LLP, उसका स्टेटस भी वो सबमिट कर दिया है. यहां तक कोई डाउट सबसेक्शन 2 में? बताओ बच्चों फटाफट से. बताओ बच्चों, सब कोई डाउट किसी को सबसेक्शन 2 में? नींद तो नहीं आ रही है ना बच्चों? सोना मत, तो अभी थोड़ा सा काम और बाकी है आज. आगे चलूं मैं? कोई क्वेरी नहीं है आपकी? चलिए. Subsection 3, what it says? An order made by tribunal under subsection 2 order, ठीक है, shall be filed by LLP with registrar of companies को जाएगा वो within 30 days after making such order and shall have effect only after it is so. यानी कि जो ऑर्डर पास किया ट्रिब्यूनल ने, जो ऑर्डर पास किया ट्रिब्यूनल ने, वो एलएलपी को कहां सबमिट करना है? रजिस्ट्रार को करना है. कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर. और वैल्यू उसकी जब ही होगी जब भी वो इफेक्टेड होगा जब आप आरओसी को सबमिट कर दें. द ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल फॉर कंप्रोमाइज should be filed by LLP to a registrar within 30 days and it will be effective only after it is submitted to registrar. ठीक है. If default is made, यानी कि in subsection 3 it means you have not submitted to ROC, then penalty on LLP how much? 10,000 plus 100 per day subject to maximum 1 lakh. And designated partner penalty 10,000 plus 100 per day subject to maximum 50. 10,000 लगेगी प्लस कंटिन्यू करते हो नहीं देते हो 100 रुपए पर डे अप टू टोटल 1 लाख. तो 1 लाख प्लस 10,000. और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसके ऊपर कितनी पेनल्टी आएगी? वही 10,000 प्लस 100 रुपए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50. क्लियर? The tribunal may at any time after an application has been made to it under this section regarding the compromise state the commencement or continuation of any suit or proceeding against the LLP on such terms as the tribunal thinks fit until the application is finally disposed of. Please read it once again बेटा. पॉइंट नंबर 5 को एक बार दोबारा पढ़ो. बहुत इजी पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है. एक बार दोबारा पढ़ लो, मैं फिर क्लियर करता हूँ. ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये एप्लीकेशन आ गई कंप्रोमाइज की. इन दैट केस अगर कोई प्रोसीडिंग, कोई मैटर चल रहा है, कोई सूट चल रहा है एलएलपी के अगेंस्ट, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर करके उस पर स्टे लगवा सकती है. स्टे मतलब रुकवा सकती है. और जब तक रुकवा देगी जब तक कंप्रोमाइज की एप्लीकेशन फाइनल नहीं हो जाए. किन कंडीशंस पर? एज द ट्रिब्यूनल थिंग्स फिट. So what subsection 5 says? The tribunal may at any time after an application has been made to it under this section state the commencement or continuation of any suit or proceeding against LLP on such terms as the tribunal thinks fit until the application is finally disposed.
तो बताओ यहाँ तक कोई डाउट बेटा? सेक्शन नंबर 60 में कोई डाउट किसी को? कोई डाउट सेक्शन 60 में? सेक्शन 60 में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट, सेक्शन 61। ट्रिब्यूनल की पावर क्या है उस कंप्रोमाइज को एनफोर्स करने के लिए? व्हाट सेक्शन 61 सेज? Where the tribunal makes order under section 60 sanctioning compromise or arrangement in respect of LLP, it shall have power to supervise the process of compromise or arrangement. यानी कि ट्रिब्यूनल खुद वॉच करेगा कि जो हम ये डिसाइड हुआ था कंप्रोमाइज क्या उसी तरीके से हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। May at any time of making such order or at any time thereafter give such direction for any modification in the compromise or, यानी कि वो कंप्रोमाइज में कुछ चेंज करना लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए, कोई मोडिफिकेशन जरूरत है, तो ट्रिब्यूनल के मोडिफिकेशन के ऑर्डर दे सकता है। If the tribunal aforesaid is satisfied that a compromise or arrangement cannot be worked satisfactorily, if the tribunal aforesaid is satisfied that a compromise or arrangement cannot be worked satisfactorily, तो कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा, ये कह के तो आ गए सब लेकिन आपस में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, then in that case tribunal may order for winding up of that. ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि नहीं भैया खत्म करो, कुछ कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा, राइट? सेक्शन 62 स्टार्ट करने से पहले 60 में कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। एक 60 में डाउट आया बच्चे का, मेरे का, इस प्रोवाइडेड पर, सब सेक्शन 2 के प्रोवाइजो पर कह रहा है कि जो ऑर्डर है, प्लीज लिसन बेटा, किसकी क्वेरी है ये? स्वाति। स्वाति लिसन बेटा, कि कह रहा है कंप्रोमाइज ओके हो गया, लेकिन वो ऑर्डर जब भी करेगा ट्रिब्यूनल, ऑर्डर तो ट्रिब्यूनल का होगा, भाई क्रेडिटर्स राजी है, थर्ड फोर्थ ओके डन, बट ट्रिब्यूनल ऑर्डर जब करेगा कि जिसने एप्लीकेशन दी है उसने सारे मेटेरियल फैक्ट्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए, ठीक है? एक तो ये क्वेरी थी आपकी इस पॉइंट पर। एक ये आया कि स्टे, पॉइंट नंबर 5 पर। तो स्टे का मतलब क्या है? देखिए स्टे मतलब ये है कि सपोज कुछ झगड़ा चल रहा है एलएलपी के ऊपर, कोई केस हो गया है एलएलपी के ऊपर, कोई और केस हो गया है, इधर कंप्रोमाइज आ गया, तो उस केस में ट्रिब्यूनल क्या कहेगा? उस झगड़े को रोक दो, अभी वो जो झगड़ा जो केस चल रहा है उसे रोक दो। So if some suit has been filed against the LLP, and meanwhile the compromise and arrangement has been proposed, and tribunal says, okay, tribunal has given the order of compromise. In that case, the tribunal may get the stay order for that other suit, which is already against the LLP. जो एलपी अगेंस्ट कोई चल रहा है मैटर, उस पर स्टे ला सकता है, भैया इसको रोक लो, पहले इसको निपटा लो, जो झगड़ा सामने है हमारे कंप्रोमाइज के, पहले इसे निपटाएंगे, बाद में ये जो चल रहा है सूट इसका वर्क करे, अभी इसको रोक, ठीक है? आयशा, सफा, आई थिंक यू आर क्लियर नाउ। चलिए, सेक्शन 62 प्रोविजंस फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन ऑफ एलएलपी। अमालगमेशन, एलएलपी को मर्ज करने का आ गया, भाई इसको मर्ज कर लेते हैं कहीं। 62 क्या कहता है? If it is shown to the tribunal that compromise or arrangement has been proposed for reconstruction of LLP, नई तरीके से काम करेंगे इसमें, और LLPs or amalgamation of two or more LLPs, and this include transfer of whole or any part of undertaking, property, liability or of any LLP to another LLP, the tribunal may make the provision for all or any of the following matters. क्या कह रहा है इसमें कि सर कंप्रोमाइज प्रपोज किया गया, कंप्रोमाइज में ये डिसाइड हुआ कि दैट वाज डिसाइडेड इन कंप्रोमाइज दैट टू एलएलपी विल बी मर्ज्ड। इन दैट केस व्हाट ट्रिब्यूनल विल डू? ट्रिब्यूनल थिंक इन दिस अरेंजमेंट, इन दिस amalgamation, there is any transfer, there should be any transfer of undertaking of one LLP to another LLP, then he will make the rules. What are the rules?
द ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ एनी ट्रांसफर एलएलपी टू द ट्रांसफर एलएलपी, वो डिसाइड करेगा कि which part, which undertaking should be transferred from one LLP to another LLP, transfer LLP to transfer LLP। ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि कौन सी कितना पार्ट या पूरी अंडरटेकिंग ट्रांसफर की जाएगी, राइट। द कंटिन्यूएशन ऑफ बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफर एलएलपी इसको ट्रांसफर किया जा रहा है of any legal proceeding pending by or against any transfer LLP। क्या कह रहा है ये? कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफर एलएलपी, एलएलपी के अगेंस्ट जो ट्रांसफर एलएलपी है उसने किसी के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग चालू कर दी है या उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स है, पेंडिंग बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफर एलएलपी। इनके अगेंस्ट को एलएलपी के जो एलएलपी हमारी तो हुए ट्रांसफर एलएलपी, एक हुए ट्रांसफर एलएलपी, तो इनके ऊपर कोई अगर केस पेंडिंग है, लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है इनके द्वारा या इनके ऊपर, तो उसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड कौन करेगा? ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। और क्या डिसाइड करेगा? द डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफर एलएलपी। डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे आप, इसका मतलब क्या है सर? डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप मतलब सिंपल वे में फर्म को डिसॉल्व करेंगे, सारी असेट वसेट बाद में बेची जाएंगी। वाइंडिंग का मतलब सब बेच दो, लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, उनको मैटर सॉल्व करेगा। पर हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? जो ट्रांसफर एलएलपी ट्रांसफर कर रहे हैं उनको डिसॉल्व कर, सब एसेट ट्रांसफर कर दी जाएंगी उसकी किसी दूसरी एलएलपी को, उसे डिसॉल्व करेंगे, बाइंडिंग अप नहीं करेंगे, उसके एसेट मार्केट में नहीं बेचेंगे। The provisions to be made for any person who within such time or in such manner as the tribunal directs dissent from the compromise or arrangement, 3/4 will be agree, but 1/4 will not be agree. Those 1/4 will be covered in point number 4. Now read in this way. 3/4 एग्री थे, सब पे एप्लीकेबल हो गए प्रोविजन, 1/4 एग्री नहीं थे, फिर भी मानना पड़ा उनको। तो उनके लिए क्या प्रोविजन है? द प्रोविजन टू बी मेड फॉर एनी पर्सन हु within such time and such manner as criminal directs dissent from the compromise or agree। कि जो 1/4 है उनको टाइम दिया गया कि आप अगर एग्री नहीं हो रहे हो तो उनका रीजन बताओ, क्या आप चाहते हो, एक टाइम दिया ट्रिब्यूनल ने, उसमें अपना केस सबमिट। तो ट्रिब्यूनल विल डिसाइड, द ट्रिब्यूनल विल डिसाइड द प्रोविजन फॉर द पर्सन who are not agree for compromise to submit their claim। Such incidental, consequential and supplement matters as are necessary to secure and that reconstruction or amalgamation shall be fully and effectively carried out। और जो अदर मैटर है कनेक्टेड उनके लिए भी ट्रिब्यूनल रूल बनाएगा। प्लीज रीड इट वंस अगेन केयरफुली। बीच में कोई नहीं जाना बच्चों, जाना तो नहीं किसी को, जल्दी तो नहीं है, जाना नहीं बेटे, आज खत्म करना है, थोड़ा सा रह गया है। Note 1, registrar has to submit the report to tribunal that the affairs of LLP have not been conducted in a manner prejudicial to the interest of its partner or to the public। एक स्टेटमेंट आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को कि जो एलएलपी है, the LLP has not working against the public interest or the against the partners। And second note, now tribunal shall make the order of dissolution of transferred LLP only after receiving the report from official liquidator that the affairs of LLP has not been conducted in a manner prejudicial to the interest of partners or the public interest। Means the person, the tribunal may make the order for dissolution, but it has to receive the report from liquidator that the LLP whose dissolution is proposed is not working against the interest of public or against the interest of partners। ट्रिब्यूनल रिपोर्ट देगा किसको? ट्रिब्यूनल किससे रिपोर्ट लेगा? लिसन, ट्रिब्यूनल शैल मेक द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑर्डर कब करेगा? पहले रिपोर्ट लेगा किससे? लिक्विडेटर से, कि भैया जो काम हो रहा था सही हो रहा था लेकिन कोई रीजन है जो हम डिसोल्व कर रहे हैं। क्लियर? दिव्या कह रही सब भीतर जब तक सुपर ओवर नहीं हो तो हम जाएंगे नहीं। वेरी गुड, जाना भी नहीं, पाप लगेगा बीच में गए तो तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Where an order under this section provides for the transfer of any property or liability, then the property or liability becomes the property of liabilities of transferee LLP. इसने ट्रांसफर किया तो उसकी बन जाएगी, सिंपल सी बात है, बताने की जरूरत नहीं थी वैसे तो कैप लॉ में. Within 30 days after the making of an order under this section, as LLP shall file a certified copy of order with the register of registration. जब कॉम्प्रोमाइज अमालगमेशन का ऑर्डर आ जाएगा उसके 30 दिन के अंदर सबमिट करना है किसको, रजिस्ट्रार को. अगर आप नहीं करते हैं तो पेनल्टी है, पेनल्टी वही जो पहले थी, 10,000 plus 100 rupees per day subject to maximum 1 lakh for LLP, and for designated partner, every designated partner 10,000 plus 100 rupees per day subject to maximum 50,000. Right? Winding up and dissolution, section 63. Winding up of a LLP may either be voluntary, अपनी मर्जी से लग रहा है काम नहीं चल पा रहा है, और by tribunal, and LLP so wound up may be dissolved. इससे वाइंडिंग अप होगा, असेट बेची जाएंगी और फर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. Circumstances in which LLP may be wound up by tribunal, section 64. Please mark this question, important for exam. Direct question आ सकता है. This may be asked in direct question. What are the circumstances in which LLP may be wound up by tribunal? इसको मार्क कीजिए स्टार. प्लीज इसको मार्क कीजिए. प्लीज मार्क दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डायरेक्ट क्वेश्चन में बी आस्क्ड ऑन दिस सेक्शन. So what are the reasons, what are the cases in which LLP can be wound up by tribunal? First, LLP decide that LLP would be LLP wound up by tribunal if for a period of 6 months the number of partner of LLP is reduced below 2. First point, LLP decide that it would be wound up by the tribunal. Second point, if LLP is continuing the business for more than 6 months with only one partner. If LLP is unable to pay debts, LLP on debts liability को pay नहीं कर सकती. If LLP has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state or public order, the security of state or public order, इंडिया के हित के बाहर काम किया है, कुछ गद्दारी वाला काम किया है. If LLP has made default in filing with the registrar the statement of accounts and solvency or annual return for any 5 consecutive financial year, लगातार 5 सालों आपने सबमिट नहीं किए, और if tribunal is in the opinion suo motu that it is just and equitable that LLP should be bound. कोई और रीजन है जिसमें LLP को ट्रिब्यूनल को लगता है कि भैया इन्हें खत्म करो, वो जाता. क्लियर? Please mark these points. These are 6 points. You should learn these points. You should learn these points. This question may be asked for 6 marks or 4 marks or 5 marks in your exam. तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा prepare. Rules for winding up and dissolution, section 65 says central government may make rules for the provisions relating to the winding up and dissolution of LLP. Central government decide करेगी भैया. ठीक है. Now miscellaneous points. ठीक है. Business transactions of partners with LLP, section 66. What it says, partner may lend money to and transact other business with LLP and has the same rights and obligation with the respect to loan other transaction as the person who is not a partner, like other member. What it's saying, if partner can contract with LLP like any other person. Simple. Because LLP has the separate legal entity. Remember, in application of the provisions of the Companies Act, section 67, क्या कहता है कि क्या कंपनी के provisions, whether the provisions of Companies Act will be applicable to LLP? No, listen.
say what it says. Central government by notification in the official gazette direct that any of the provisions of Companies Act is specified in the notification shall apply to LLP, with the exception, modification, adoption as may be specified. क्या कह रहा है वो? Central government will decide which provisions will be applicable of Companies Act to LLP. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी कि कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबल होंगे एलएलपी पर, एज इट इज एप्लीकेबल होंगे या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल. A copy of every notification, such notification proposed to be issued under subsection 1 shall be laid in draft before each house of parliament for 30 days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if both houses agree in disapproving the issue of notification or both houses agree in making any such modification in the notification shall not be issued or issued only in modified form. क्या कह रहा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि this notification should be presented in both house of parliament for 30 days and they will approve, either they will reject or either they approve, reject or approve with modification. Then if approve, okay. If not approve, then it will not be allowed, it will not be issued. But if they approve with modification, then it will be applicable only after such modification. कि ये जो नोटिफिकेशन आया ये संसद के दोनों हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा, उनको पास करेंगे या नहीं करेंगे. पास कर दिया वेल ओके, नहीं किया तो या तो उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, बात खत्म हो गई. अगर अप्रूव किया है कंडीशन के साथ तो वो पहले पूरी करनी पड़ेगी, उन्हीं मॉडिफिकेशन के साथ वो अप्रूव किया जाएगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 68 सेज कि document required to be filed, recorded, registered under this act may be filed, recorded, registered in the prescribed manner. जिस तरीके से रूल्स में लिखा है उस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. एंड देन कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड affixing the digital signature with the registrar be admissible as the valid. If document is signed, is submitted electronically with digitally signed, it is valid evidence. Any information supplied by the registrar certified by him by affixing digital signature to be the true extract as be admissible in evidence and be presumed unless evidence to the contrary is admissible. मतलब कि जो इंफॉर्मेशन आरओसी ने दी है उसको साइन है, डिजिटल साइन है, वो वैलिड एविडेंस माना जाएगा. एंड होपफुली दिस विल बी द लास्ट पॉइंट. पेमेंट ऑफ additional fees, section 69 says any document or return required to be filed with the registrar if not filed or registered in time के अंदर नहीं होता है, then may be filed, registered after that time, even that time with the payment of additional fees. अगर टाइम पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी. Enhanced punishment section 70, what it says, the last section for you. In case a LLP or any partner or designated partner of such LLP commits any offense, LLP or any partner or designated partner shall be punishable with imprisonment as provided, but in case of offenses for which fine is prescribed, with fine which shall be the twice the amount of such. क्या कह रहा है? In case LLP or any partner, designated partner of such LLP commits any offense, then LLP or any partner or designated partner shall be punishable with imprisonment as provided. Punishment वही होगा, but in case of offenses for fine, with fine which shall be the twice of the offense of fine. कि अगर आपने ऑफेंस किया है और सही आप वो फिर भी पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो फाइन डबल हो सकता है. ठीक है. नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन. So now the time for super over. ठीक है. एक क्वेरी क्या है आपकी? मिस्टर जगत इज सेइंग सर इन केस
any amount is lended to LLP when at the time of repayment whether LLP is repaid the loan amount with interest. कह रहे हैं कि LLP ने पार्टनर से कोई लोन लिया है तो क्या इंटरेस्ट पे करना है. दिस इज एज पर द एग्रीमेंट. ठीक है. नाउ are we supposed to know the schedules? I don't think so. You are supposed to know the you are supposed to have the knowledge of the schedules. ठीक है. मुझे लगता है एग्जाम में आएंगे. Roshni is saying, sir, I did not realize when the time passed in your lecture. Thank you, sir, for such a good explanation. Thank you so much, बेटा. पर अभी खत्म नहीं हुआ है. अभी मैं जा नहीं रहा हूँ. अभी रुक जाओ. पेनल्टी शूट आउट 4 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. Who shall sign the statement of accounts and solvency prepared by the LLP? By any one partner authorized in this behalf, by at least two partners authorized in this behalf, by all the partners, by designated partners. What is the periodicity of preparing the statement of accounts and solvency by LLP? Within 3 months from the end of financial year, within 9 months from the end of each financial year, within 12 months from the end of each financial year, within 6 months from the end of each financial year. Circumstances in which LLP may be wound up by the tribunal, section 64. If for a period of for more than 6 months, the number of partners of LLP is reduced below 2, if LLP is unable to pay its debt, if LLP has acted against the interest of sovereignty, integrity of India, security of the state of public order, any of the above. LLP shall within of the date of registration inform concerned registrar of firm or registrar of companies as the case may be about the conversion of particulars of LLP. Which schedule of LLP Act 2008 deals with the conversion of any unlisted public company into LLP? First schedule, second schedule, third schedule, fourth schedule. What are the penal provisions for LLP, if any? LLP fails to comply with the provisions of section 34, subsection 3, which relates to the maintenance of the books of accounts, other records, and audit, etc. It shall be punishable with 15,000 to 5 lakh, 25,000 to 5 lakh, 20,000 to 5 lakh, 100 rupees per day, subject to maximum 1 lakh. ठीक है. भेजिए आप लोग फटाफट से आंसर्स. आप लोग आंसर शुरू हो गया ने. एक क्वेरी है बीच में, एक छोटी सी लास्ट में कल से.
Can non-filing of statement of accounts and solvency can be treated as non-payment of debt? Answer is no. डेट मतलब जो लोन लिया है वो पे नहीं कर पा रहे. ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं. बट इससे पहले एक क्वेरी है एक बच्चे की, मिस्टर जगत. Sir, at the time of last revision, reading summary of the chapter is sufficient, or else we have to entire chapter. I should say you should have the knowledge of entire chapter. Summary is beneficial only if you have the full knowledge of the chapter. ठीक है. First point, by designated partners. Second point, within 6 months. Third point, यहां तक तो सब सही थे, पर गलती हुई यहां पर. LLP shall within of the date of registration inform the concerned registrar of the firm or registrar of companies as the case may be about the conversion of the particulars of LLP. 7 days, 10 days, 15 days, 30 days. यहाँ आप लोग कुछ बच्चों से तो गलती दिख रही है मुझे. चलिए स्लाइड्स पे आते हैं. स्लाइड नंबर क्या है एक बार मैं चेक कर लूं बच्चों. स्लाइड पे आते हैं. क्वेश्चन देख लो एक बार दोबारा, फिर मैं स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को. क्या था? एलएलपी को इन्फॉर्म करना है कन्वर्जन होने के बाद कंसर्न रजिस्ट्रार फर्म को, कंसर्न कंपनी को, कितने दिन के अंदर अबाउट द कन्वर्जन, कितने दिन के अंदर. मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है 30 डेज. चलिए कम टू द स्लाइड नंबर 105. सी, एलएलपी शैल विद इन 15 डेज. गलती हो गई. Of the date of registration, inform concerned registrar of firm, registrar of company, as the case may be about the conversion of the particulars of that. Right? समझ में आई गलती? चलिए अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. What should be the time? 15 days. जागो. विश शेड्यूल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए. फोर्थ शेड्यूल. पेनल्टी. अरे क्यों बार बार भूल जाता है. 100 पर डे. ठीक है. who has given the correct answers? मिस वैशाली बिंदल. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा जी. मिस प्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन.
मिस्टर हरेंद्र शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। बस इतने लोगों के आंसर आया अभी मेरे पास, एक ही आया है मेरे पास आंसर। मिस स्वाति पांडे, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये तो आज खत्म हो गया, लेकिन अभी कुछ चीज बची है। देखो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। ये मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, बिल्कुल मैंने मेंशन कर दिए हैं। एंड दीज आर 15 पॉइंट्स। तो जब भी आप डिफरेंस, whenever you mention the differences between two, so one column should be added of basis. So there are 15 points, and I suppose ki, and you must have, you must learn about at least 10 to 12 points. If question is asked for 6 marks, you must mention about at least 10 to 12 points. Same way, LLP and company. So you must learn all the points, but just 8 points. You must learn all the points. Okay. Summary I have enclosed. Okay. So one request from my side, you must get revised these points। मतलब पॉसिबल हो तो प्लीज आज ही इसको कर दीजिए। एक टुनाइट आप प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि प्लीज फीडबैक जरूर भर के भेजिएगा। हमारी गरीब लोगों की थोड़ी सी, हम जैसे गरीब लोगों की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है आप फीडबैक दोगे तो, अगर अच्छा लगा होगा जैसे भी। एंड वन पॉइंट, वन थिंग फ्रॉम वन पॉइंट, मिस दिव्या, दिव्या सिंह सर, मिस यू सर, बेटा मिस यू। यू नॉट मिस, आई विल मिस यू ऑल ऑफ यू। मैं सबको मिस करूंगा। बहुत अच्छा था मेरे साथ, आपके साथ सेशन मेरा। एंड होपफुली यू हैव एंजॉयड, मजा आया होगा पढ़ने में। और जो मेरा पर्पस था कि एलएलपी आप क्लियर हो जाए, होपफुली हो गया होगा। एनी मोर क्वेरी प्लीज टेल मी, देन आई विल लीव। Okay, I think there is no query. So this is all from my side. Thank you so much, बच्चों। Thank you so much, anybody. Thank you, everyone.